of anticipatory bail, heard the counsel for the parties, other co-accused persons, namely Dashrath, Ranjana, Brajendra, and Shailendra Agrawal, were released on bail by this court. Case of applicant is similar to that of other co-accused persons. On grounds of parity, application is allowed. Applicant be released on bail. 50,000 one surety. I'm extremely sorry. I want to make a humble prayer. Item number 8 just now. I was busy and before the another honorable court. 8? 8, my lord. 8 was dismissed. यस, इसमें कुछ कहना है आपको? मेरा कहना है था कि दिस इज द क्लियर केस ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन, इधर दिस इज द केस ऑफ कंसेंट और फॉल्स इम्प्लीकेशन ड्यू टू You are an army person. Highly delayed FIR. May not kindly have a look. FIR may have been delayed, but your conduct is... Conduct देखिए सर, उसका प्रोसिक्यूटर का भी 3 बार बताती मेरे साथ ये सब रिलेशनशिप में रही, कभी शिकायत नहीं की, और अल्टीमेटली आई विल फेस द ट्रायल. रेगुलर बिल कंसिडर कर. आई विल फेस द ट्रायल, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो माय हम्बल से लुकिंग टू हिज स्टेटस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ही विल बी सस्पेंडेड. मान लीजिए बाद में जाके एक्विटल होता तो ये जो उसको नुकसान हो जाएगा तो इरिपेरेबल हो जाएगा. yes. यदि जजमेंट में एक्विटल होता है तो फिर इसका जो भरपाई है वो नहीं हो पाएगी यदि इसको उठा के टर्मिनेट कर देते हैं. आर्मी है. मेरा निवेदन था इसको सर एक एंटीसिपेटरी का लाभ मिल जाए. ही विल फेस द ट्रायल. यदि ट्रायल में कन्विक्शन होता है, कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ एन आर्मी. आपको तो काइंडली हैव द कंडक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग आल्सो. प्रोसिक्यूटर से कंडक्ट तो बाद में देखेंगे. यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट बिकॉज़ यू आर मतलब इसे उसके कंडक्ट को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो सच बोल रही है. वो सच नहीं बोल रही. आप अपने मैसेज तो देखिए जो आपने दिए हैं, क्या दिए हैं उसके हस्बैंड को. एक आर्मी पर्सनल होते हुए आपने क्या मैसेजेस दिए हैं एक हस्बैंड को. अपना कंडक्ट तो देखिए. आप बाद में प्रोसिक्यूटर का दिखाइएगा. यस, ठीक. केस में मैंने एक्यूज नितिन है, आपने एक बेल दी है, एंटीसिपेटरी मैंने फाइल किया है. यस. और 420 है. हम ससुर हैं. एक हमारी दमान की दुकान है नितिन सोनी की छिंदवा छतरपुर में. उनका कहना है कंप्लेंट का कि हमने जेवर बनवाने के लिए दिए थे. वो भी काम करता है स्मिथ का. तो उस पर से डिस्प्यूट हुआ. कई सालों से काम करते करते वो 108 ग्राम सोना नहीं लौटाया. उसने जिस जो जमात पे छूट गया उसके बदले उसने आश्वासन दिया था कि हम पैसा लौटा देंगे. Somebody has been released on bail. Yes, I have file copy. Annexure मैंने अलग से फाइल किया. दैट इज IA 2923 of 23 12 को ये फाइल किया. हम ससुर मिर्जापुर में रहते हैं. जो मुख्य आरोपी नितिन. Allegations are against नितिन. यस. आपका क्या रोल है? कुछ नहीं. हम सब कुछ नहीं. हम ससुर हैं. हमारी वहां रहते हैं मिर्जापुर में. हमारा तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ. आपका रोल ये है कि नितिन ने 128 ग्राम सोना जो था इसको बनाने के लिए दिया था, वो लेकर के वहां से फरार हो गया वो. फिर ये चंद्रशेखर सोनी और राम बाबू सोनी उनके ससुर हैं. उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं आपका जेवर जो है सोना वापस करवा दूंगा, जेवर. और ये फिर ये उस दुकान में बैठने लगे. दुकान में बैठने वाले फिर ये सारा का सारा दुकान का सामान लेकर के दुकान बंद करके चले गए. इसमें आया क्लियर मालूम. षड्यंत्र की जानकारी 5 दिन नितिन कुमार उसके परिवार की नीयत खराब होने लगी. षड्यंत्र के लोगों के द्वारा हॉलमार्क सेंटर रिफाइनिंग डर के समस्त सामग्री खुर्द-बुर्द सराफत संघ कारीगर संघ से प्राप्त. ये जो इनिशियल एलिगेशन है दैट इज नॉट अगेंस्ट एप्लीकेंट. बाद में इनका दूसरा एक्ट हो सकता है. एप्लीकेंट हैज फाइल्ड
First application under section 438 of Code of Criminal Procedure. Counsel appearing, police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that as per prosecution story, one Nitin Soni has taken gold from gold makers and he did not pay the balance amount of 128 grams of gold. Full stop. Nitin Soni is main accused in the case. Allegation against the applicant is that he is father-in-law and assured return of money, but he did not return the money and on the contrary, took all the belongings in a shop and absconded. In these circumstances, it is submitted that applicant is not has no role in the main act which has been committed. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate opposed the application for grant of bail. Heard the counsel for the parties. Principal allegations are made against one Nitin Soni, who has not returned the money of 128 grams of gold. Full stop. Applicant is said to have indirectly helped the main accused person by removing the belongings in the shop of one Nitin Soni, but he has no role in allurement or not making any payment of gold. Full stop. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. ये नंबर लिख लेना है. Obliged. Number 14. Diary. Case diary called after 1 week. The notice भी हो 14 है. Notice to respondent number 2. Government advocate is directed to call for case diary after 2 weeks. Number 15. But this matter can be heard after vacations, my lord. Learned senior counsel appearing for appellant makes a prayer for adjournment. Prayer is allowed. List after vacation. Probably the service report is showing blank over there, my lord, on the last date. Government advocate appearing for the state has granted 1 week's time to serve the notice of this appeal. नोटिस appeal. Registry is directed to place service report on record. आपने सर्विस कर दी? सर हमने कर दिया उसमें रिपोर्ट ब्लैंक दिख रही है सर, जो ऐप है का. सर, ये हमने कर दिया. You may have served through हाँ, police station. आपका डिस्पैच दिख रहा है उसमें. Government advocate appearing for state submitted that respondent number 2 has been served. List after vacations. वो इन केसेस में सर जो वेबसाइट पे या ऐप में जो आ रहा है वो नॉर्मली जहाँ स्टेट सर्व कर रही डिस्पैच की डेट तो दिखती है, पर सर्विस रिपोर्ट में डेट जो है वो वहाँ ब्लैंक दिख रहा है. No, actually when process is issued by court, Correct. then there would be. Then DA files report that Yes. it has In been this served. case it is by the council. By for this. police, then Yes. there is no report. Number 16. मतलब 14A ऑफ SC ऑफेंस अंडर सेक्शन 294 323 327 526 34 321 ऑफ SC एक्ट. सर एप्लीकेंट जेल में 9/10/2023 से चालान इसमें पेश हो चुके हैं. 9/10/2023. एक्चुअल जो विवाद इनका, तो जो फरियादी है ये ढाबे का संचालक है, इनका खाने पीने के लिए विवाद हुआ ढाबे में, तो एलिगेशन लगा महार जाति कह के और हाथ मुक्के से मारपीट की 600 रुपए शराब पीने के लिए मांगे, पर सिर्फ इनके खिलाफ सिर्फ इसके 10 केस पुराने, इस कारण से मुलजिम बना दिए. विवाद हुआ सिर्फ खाने पीने का मात्र इनका. सर Yes, madam. सर एक पर भी यही एलिगेशन दोनों साथ में ही थे. अच्छा, आप दूसरे के लिए हाउस में 8 केस उनके हैं, 10 केस हमारे हैं. के ऊपर प्रीवियस रिकॉर्ड. हाँ, इसी कारण मात्र इसमें बेल हुई, मात्र इसमें है तो पैसे मांगने की विवाद हुआ. Yes. एक के ऊपर 10 केस हैं, एक के ऊपर 8 केस हैं. मतलब गणेश के ऊपर 10 केस 10 आपराधिक रिकॉर्ड है, वो भी सेम टाइप के मामले. इस केस में जो सही सिर्फ ये है कि जानने की Charge sheet has been filed. मतलब Charge sheet has been हाँ filed. फाइल हुई सर. What are injuries? State. और लात घूंसू से मारा है. हाथ मुक्के से. आप लोगों का रिकॉर्ड इतना सारा है. हाँ सर, बस वही वीक पॉइंट सर कि रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ही कहानी मुझे बना है इसमें. बाकी इस केस के यदि देखें तो सिर्फ विवाद हुआ खाने पीने को लेकर, ढाबे वाला ढाबे के संचालक है सर ये. इतना रिकॉर्ड है तो आप कहीं जाएंगे तो पैसा नहीं देंगे खाने पीने का. नहीं नहीं सर, पैसे तो देंगे सर, पैसे नहीं पैसे हम देने की तैयारी, पर सर टोटल फास्ट 8 केस है तो दादागिरी में खाना खाएंगे. नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं.
10 साल की सजा रही है। कितना टाइम हो गया जेल में आपको? सर ये 9/10/2023 से सर अभी गए हैं आप? चालान पेश हो गए सर इसमें। कोई बात नहीं, थोड़ा और रहिए, 3 महीने बाद कंसिडर करेंगे। आपके रिकॉर्ड्स हैं बहुत सारे। गार्ड 25 साउंड स्ट्राइक उसमें कुछ में तो बरी हो गए सर, यदि आप टाइम दे मैं ऑर्डर पीस करूँ लगभग सर। सारे बिचारा दी नहीं नहीं उसमें वकील साहब ने बताया कि उसमें बरी हो गए हैं। Applicants has filed, appellants has filed appeal under section so and so against order dated so and so by which their application for grant of bail has been dismissed. Counsel appearing for appellant submitted that there was altercation with a dhaba owner, over which सर सिंपली विड्रॉ कर दें। विड्रॉ कर ले रही मैडम मैं counsel appearing for appellants 3 months prays after. for withdrawal with liberty to file repeat application after a period of 3 months. Prayer is allowed. Application is dismissed. Appeal is dismissed with aforesaid liberty. number 70 That appeal under section 14A of SC/ST Act law. डायरेक्ट Diary नहीं है नहीं कुल वाले after 1 week. जी Last date of hearing notice. State नोटिस notice भी जाए served हो चुके भेज दिया है सर। after 1 week. नंबर 18 Please allow it. Appeal in the form of इसमें डायरी नहीं है. Not in the last 2 occasions also no diary was there. Last 2 occasions. Vital lordships to order dated 14/12/2020. मंडे के लिए Order dated 14/12/23 सर, उसमें आपने मंडे के लिए रखा था because diary was not there on the previous occasion itself. एक ही बार डायरी नहीं है सर 28/11/23 को भी नहीं. notice was served. Marriage. Government advocate is granted one more opportunity to call for case diary list after 1 week. It is made clear that diary shall be made positively available on next date of hearing. my lord I am for complaint So and so for complainant. चालान पेश हो चुका है। नेक्स्ट वीक As prayed adjourned after 1 week. नंबर 20 इसमें लॉर्डशिप नोटिस का था, कल सर्व हो गया है रिपोर्ट, अभी पीडीएफ हमारे पास आ गई है, कल सर्व हुआ आज की डेट के लिए. Yes. My lord, it's a first appeal, my lord. Criminal Kal appeal sir under हुआ. section 14A, my lord. कल सर्व करके भेजा है, पीडीएफ आ गया है मेरा, कल शाम को सर्व किया आज की डेट के लिए. तो उनको टाइम तो देना पड़ेगा अपीयरेंस के लिए, नहीं तो फॉर्मली हो जाएगा. So, my lord, after 2 days, because on last date of hearing, your lordship has also directed me to send in the WhatsApp. I send it and he made a conversation that he has engaged to वो तो one सर्व हो Anil गया. Dwivedi. सर्व हो गया. But he has not submitted the wakalat now. Why he is not? Yes, बताइए क्या कहना है आपको? My lord, in fact, initially I have filed the MCRC. That was
कल appeal under सर section 14A, my lord. कल सर्व करके भेजा है, पीडीएफ आ गया है मेरा। ये हो जाएगा So my lord, after 2 days रखले, दोनों because on लड़ते last हुए date of दिखाई hearing, दिए। your lordship has तो also मैंने directed me दोनों to के पास send गया, in the बोला क्यों लड़ रहे हो? WhatsApp. तब I सतीश send ने it बोला and कि रात he की made a पैसे की बात को लेकर conversation मुझसे that लड़ झगड़ रहा he है। has engaged मैंने रात to में one सोचा क्या Anil हुआ, तब उसने Dwivedi. कहा मुझे सर, पहले गाली But दी, he has फिर not लड़ने लगा। submitted मैंने the दोनों को वकालत ना समझाने हुआ, का why he प्रयास is किया। not. यस तो बताइए नहीं क्या माना। तब कहना है सतीश आपको? वैद्य ने राजदीप My lord, से in गाली fact, दी। तब राजदीप initially ने I माँ have बहन की filed the गाली देकर MCRC that was नीचे मेहरा कहकर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया और अपने पैंट के जेब में से एक चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से सतीश वैद्य के पेड़ में मार दिया। आई विटनेस हो गया है लोग। एक दूसरा लॉर्डशिप दिनेश है। ये नहीं हुआ सर अभी। दिनेश नहीं, अभी लोकेश नहीं हुआ, दिनेश नहीं हुआ। ये भी आई विटनेस है। आई विटनेस है। अपीलेंट हैज फाइल्ड दिस अपील, सेकंड अपील। मेरा निवेदन है सर, इसको आफ्टर विड्रॉल कर लेता हूँ, आफ्टर एग्जामिनिंग ऑफ द बोथ आई विटनेस। Counsel appearing for appellant prays for withdrawal of appeal with liberty to file repeat application after examination of eyewitness, namely Lokesh Chore and Dinesh. दिनेश किरण गौतम और जितेंद्र नारविदे। इनका नहीं, इनका स्टेटमेंट 1 महीने बाद हुआ है उसे। इनका भी हम बता देते हैं। 4 लोगों का है हमारा। After examination of material witnesses oblique eyewitnesses. Number 22. Whereas the applicant has remained in custody for My lord, 3.5 in this case, lordship, I pray for Passover by tomorrow. My lord, डायरी है, फाइल भी है, लेकिन हमारे पास नहीं आ पाई है। या तो पासओवर कर दें या कल के लिए कर दें। List tomorrow, my lord. Number 23. इसमें डायरी नहीं है लॉर्डशिप, फर्स्ट टाइम। Case diary called after 1 week. Number 24. I'm the proxy counsel. The counsel in this case now is busy in some medical condition. His wife is ill, my lord. What do you want? And adjournment, my lord, for 1 week time, my lord. My lord. So after vacation. Counsel appearing for applicant is directed to remove the default list after vacations. My lord. Number 25. Mobilize. My lord, I am planning to take this case next week. Why? My lord, my senior is in hospital. सर इसमें एक केस और है, उसके साथ लिंक कर दिया जाता है। Government advocate makes a request to link this case with number लिख के 54,322 अभी लिख के दीजिए। List the case with so and so for analogous hearing. Prayer is allowed. Registry is directed to list the case after vacations along with it. I am able for complaint in lordship. मेरा निवेदन है, काफी भी दिला दी जाए। So and so for the objector, copy of application and documents be supplied to the objector. Oblige, madam. Number 26. First application under section 439. The applicant is in my lord in jail since 4/2/23. Offences are registered under section 363, 376. Age क्या है? What is the age? My lord, as per
आप जेल में कब से? 6/7/2023। ये आपको कोई इनका रिकॉर्ड दीजिए। एक बड़ी बड़ी घटना है, कार चोरी वगैरह। का कोई एलिगेशन नहीं है हमारे खिलाफ। Applicant has filed first application under section 439 police station offences है ना, crime number. Counsel for applicant submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. Offence is triable by judicial magistrate first class and sentence prescribed for said offences is up to 7 years. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It has submitted that as many as 15 cases are registered against the applicant in year 23. All the cases relates to house breaking and theft, house trespassing and theft, full stop. Considering the said record, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for applicant submitted that applicant was released on bail in crime number 475 of 23, registered at police station Panna MP under section 457, 380, 461, 511 of Indian Penal Code. It is submitted that court has considered the criminal background of applicant of 15 cases and has been and was pleased to enlarge applicant on bail. In these circumstances, applicant be released on bail in this crime number also. है ना? फिर गवर्नमेंट एडवोकेट का लिख देना. Heard the counsel for the parties, considered the criminal record of applicant. Applicant is consistently being involved in doing house trespassing and theft. As many as 15 crimes has been committed by applicant in year 23. After being released on bail, applicant is violating the conditions of bail order, that is of 437(3) of CRPC. Full stop. As applicant is misusing the bail granted to. ये तो अभी हुई है. 15 बार से आपको बेल पे छोड़ा गया है, फिर आपने अपराध नहीं हुई ना. अच्छी बात है. क्या लिखा है? एप्लीकेंट आफ्टर बीइंग अभी किसी में बेल नहीं हुई है. बेल हुई है, सब पे लगे हैं, जब तक पूरी बेल सब तो बाहर नहीं निकले. अरे आपकी कितने में बेल हुई है? 2 ऑर्डर मैंने A2 में लगाए हुए हैं, नेक्स्ट A2 में लो. हाँ. और एक आपके हाथ में 3 नीचे से हो. 5 केस में बेल हुई है. आप बोल रहे हैं हमारी किसी में बेल नहीं हुई. बेल हो गई, मतलब मिसयूज नहीं किया. अच्छा, ठीक है. एग्जीक्यूट नहीं हुई. अभी किसी में बेल पे आपको छोड़ा नहीं है. भरा नहीं गया माय लॉर्ड. 437(3) काट देना. Considering the criminal antecedent of applicant that he is repeatedly being involved in committing act of theft, I am not inclined to enlarge applicant on bail. Application is dismissed. ये इनका पूरा रिकॉर्ड लिख देना. नंबर 28
अंडर सेक्शन 14A माय लॉर्ड। कल सर्व करके भेजा है, पीडीएफ आ गया है माय लॉर्ड। ये हो जाएगा। So my lord, after 2 days रख लें because on last date of hearing your lordship has also directed me to send in the WhatsApp. I send it and he made a conversation that he has engaged to one Anil Dwivedi, but he has not submitted the वकालत ना हुआ भाई, is not. Yes, बताइए क्या कहना है आपको? My lord, in fact initially I have filed the MCRC that was नीचे मेहरा कहकर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया और अपने पैंट के जेब में से एक चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से सतीश व्यक्ति के पेड़ मार दिया। आई विटनेस हो गया है। एक दूसरा लॉर्डशिप दिनेश है। ये नहीं हुआ सर अभी। दिनेश नहीं, अभी लोकेश नहीं हुआ, दिनेश नहीं हुआ। ये भी आई विटनेस है। आई विटनेस है। अपीलेंट हैज फाइल्ड दिस अपील, सेकंड अपील। मेरा निवेदन है सर, इसको आफ्टर विड्रॉल कर लेता हूँ, आफ्टर एग्जामिनेशन बोथ आई विटनेस। काउंसिल अपीयरिंग फॉर अपीलेंट prays for withdrawal of appeal with liberty to file repeat application after examination of eyewitness, namely Lokesh Chore and Dinesh and किरण गौतम और जितेंद्र नारविदे। इनका नहीं, इनका स्टेटमेंट तो 1 महीने बाद हुआ है उसे। इनका भी बता देते हैं। 4 लोगों का है हमारा। After examination of material witnesses oblique eyewitnesses। Number 22. Whereas the applicant has remained in custody for my lord, 3.5 in this case, lordship, I pray for pass over by tomorrow, my lord। डायरी है, फाइल भी है, लेकिन हमारे पास नहीं आ पाई है। या तो पास ओवर कर दें या कल के लिए कर दें। लिस्ट टुमारो my lord। Number 23. इसमें डायरी नहीं है लॉर्डशिप, फर्स्ट टाइम। Case diary called after 1 week। Number 24. I'm the proxy counsel. The counsel in this case now is busy in some medical condition. His wife is ill. What do you want? An adjournment for 1 week time. After vacation. The counsel appearing for applicant is directed to remove the default list after vacations। Number 25. Mobilize it। My lord, I am planning to take this case next week. Why? My lord, my senior is in hospital. सर इसमें एक केस और है, उसके साथ लिंक कर दिया जाए। Government advocate makes a request to link this case with number लिख के 54,322 अभी लिख के दीजिए। List the case with so and so for analogous hearing। Prayer is allowed। Registry is directed to list the case after vacations along with it। I am able for complaint in lordship। मेरा निवेदन है काफी भी दिला दी जाए। So and so for the objector, copy of application and documents be supplied to the objector। Number 26. First application under section 439. The applicant is in my lord in jail since 4/2/23. Offences are registered under section 363 C76. Age क्या है? What is the age? My lord, as per
आप जेल में कब से? 6/7/2023। ये आपको कोई इनका रिकॉर्ड दीजिए। एक बड़ी बड़ी घटना है, कार चोरी वगैरह का कोई एलिगेशन नहीं है हमारे खिलाफ। Applicant has filed first application under section 439 police station offences है ना, crime number. Counsel for applicant submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. Offence is triable by judicial magistrate first class and sentence prescribed for said offences is up to 7 years. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that as many as 15 cases are registered against the applicant in year 23. All the cases relates to housebreaking and theft, house trespassing and theft, full stop. Considering the said record, applicant may not be released on bail. Third, the counsel for applicant submitted that applicant was released on bail in crime number 475 of 23, registered at police station Patna MP under section 457, 380, 461, 511 of Indian Penal Code. It is submitted that court has considered the criminal background of applicant of 15 cases and has been and was pleased to enlarge applicant on bail. In these circumstances, applicant be released on bail in this crime number also. है ना? फिर government advocate का लिख देना. Heard the counsel for the parties, considered the criminal record of applicant. Applicant is consistently being involved in doing house trespassing and theft. As many as 15 crimes has been committed by applicant in year 23. After being released on bail, applicant is violating the conditions of bail order, that is of 437(3) of CRPC. Full stop. As applicant is misusing the bail granted to. ये तो अभी हुई है, 15 बार से आपको बेल पे छोड़ा गया है, फिर आपने अपराध नहीं हुई ना, अच्छी बात है। क्या लिखा है? एप्लीकेंट आफ्टर बीइंग, अभी किसी में बेल नहीं हुई है? बेल हुई है, सबके लगे हैं, जब तक पूरी बेल सब तो बाहर नहीं निकले। अरे आपके कितने में बेल हुई है? 2 ऑर्डर मैंने A2 में लगाए हुए हैं, नेक्स्ट A2 में। हाँ, और एक आपके हाथ में 3 नीचे से हो। 5 केस में बेल हुई है। आप बोल रहे हैं हमारी किसी में बेल नहीं हुई? बेल हो गई, मतलब मिसयूज नहीं किया। अच्छा, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं हुई। अभी किसी में बेल पे आपको छोड़ा नहीं है? भरा नहीं गया माय लॉर्ड। 437(3) काट देना. Considering the criminal antecedent of applicant that he is repeatedly being involved in committing act of theft, I am not inclined to enlarge applicant on bail. Application is dismissed. ये इनका पूरा रिकॉर्ड लिख देना. नंबर 28
under section 14A, my lord. कल सर्व करके भेजा है, पीडीएफ आ गया है my lord, ये हो जाएगा। My lord, after 2 days reclaim, because on last date of hearing, your lordship has also directed me to send in the WhatsApp. I send it and he made a conversation that he has engaged to one Anil Dwivedi, but he has not submitted the wakalatnama. Why he is not? Yes, बताइए क्या कहना है। वैद्य ने राजदीप My lord, in fact, initially I have filed the MCRC, that was नीचे मेहरा कहकर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया और अपने पैंट के जेब में से एक चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से सतीश व्यक्ति की पीड़े मार दिया। आई विटनेस हो गया है लोग। एक दूसरा लॉर्डशिप दिनेश है। ये नहीं हुआ सर अभी। दिनेश उसकी क्लेम हो चुकी है स्टेट तो कुल्हाड़ी से भी मारने का आरोप है। कुल्हाड़ी सीज है मतलब और है, हेड में इंजरी है और ये 62 इयर्स ऑफ एज। 62 years। ये काटा किससे इन्होंने? हाथ से ही, मुंह से ही काटा? मुंह से उंगली काटे हैं। कुल्हाड़ी सीज हुई, कुल्हाड़ी की क्या चोट है? अपर हेड राइट साइड में मतलब जो है हार्ड एंड सॉफ्ट। कहाँ पे बताइए? Applicant has filed first application, police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. तो मैडम आपने कुल्हाड़ी से उसको भी यूज किया है? वो मोंदी चोट का आया था मेलोड इसमें, पर मेन इसमें ये आया है कि मुंह से बाएं हाथ की उंगली को काटा है। क्या है? राइट साइड ऑफ अपर हेड है क्या है? क्या मतलब हेड आया उसमें, हेड सिर पे मारने का ही एफआईआर दिया। और जिसकी बेल पन्ना लाल की और हुई 2 की, उसमें भी उसको मनहानि से मारने का था, वो बेल ग्रांट हो चुकी है। ओपिनियन है डीवीएस का? ओपिनियन है? Applicant has filed first application, police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant was not armed and he has caused injury by teeth bite to the complainant. Full stop. It is submitted that injuries were not grievous in nature. Applicant is in jail since 20th/10/23. In these circumstances, he may be released on bail. Yes, state. एक्सरे के लिए सलाह दी थी, एक्सरे की रिपोर्ट है। Applicant has government advocate opposed the application for grant of bail. Heard the counsel for the parties. There is no opinion in the case diary regarding nature of injury suffered by the complainant. Full stop. In MLC, it has been stated that complainant has also been assaulted with an hard and sharp object. However, in absence of any opinion of the doctor regarding nature of injury, however, there is no absence of any there is no opinion of the doctor regarding
Nature of injury caused. Applicant is an old man aged about 62 years. कोई रिकॉर्ड है इनका? With no criminal records, considering aforesaid facts and circumstances allowed 50,000 one surety. Number 34. First application under section 439 CRPC, in the present case, all the material witnesses have been examined, and they have not supported the prosecution case and declared hostile. सब hostile है? सभी hostile. Yes, state. Yes, Applicant has filed first application 439 police station offences. It is submitted that all material witnesses has been examined and they are hostile. Government advocate appearing for state is unable to decide aforesaid fact. Third, considering the fact that material witnesses are hostile before court, application is allowed 50,000 one surety. Obliged. Number 35. Lordship, that is his husband, Lordship. Yes. 304B. Date of incident is 4/8/2023 and FIR on 23/8/2023. Lordship. कौन सा केस में है? 36? 35. Yes. Lordship, that as per allegation, Lordship, 5 लाख रुपए ये इसमें आज शादी के 1 वर्ष तक मेरी लड़की कंचन ससुराल में राजी खुशी रही थी। 1 वर्ष बाद मेरे दामाद सत्येंद्र मिश्रा लड़की कंचन मिश्रा से बोला कि अपने माँ बाप से 5 लाख रुपए ले आओ तो मैं कुछ व्यापार करूं। लड़की कंचन मुझे एवं मेरी पत्नी रामेश्वरी बहू को बताती थी। दिस इज द एलिगेशन एंड शी हैज हैंगिंग हरसेल्फ in jail since 23/8/2023. Lordship. ये स्टेट लास्ट हरासमेंट में का मतलब ये आया है पति सत्येंद्र मिश्रा ससुर नरेंद्र मिश्रा एवं सास शकुंतला मिश्रा दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करती पूर्ति न होने पर अक्सर मारपीट गाली गलौज कर शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से सब जनरल है। जनरल तो स्पेसिफिक एलिगेशन है एप्लीकेंट के। इसमें जो सभी के लिए सभी कथनों में ऐसी इसी टाइप से है कि इन लोग मारपीट करते थे और प्रताड़ित करते थे पैसे को। सब जनरल ही है ना? इनका कुछ स्पेसिफिक आया है क्या? नहीं इनका ऐसा स्पेसिफिक नहीं। Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that only general allegations regarding demand of dowry and harassment has been made against the applicant. There is no particulars of harassment and demand of dowry has been given. Full stop. Applicant is in jail since 23/8/23. Investigation is complete and charge sheet has been filed. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate opposed the application for grant of bail and read over the statement of parents. Full stop. Heard. On going through the statements which was read over in court, it is found that only general allegations of demand of dowry and harassment has been made. Investigation is complete. Charge sheet has been filed in these circumstances allowed. Number 36. इसमें 164 में सहमति है और 29 रहती है। Submitted that prosecutrix is major and consenting party. Government advocate relied upon 164 statements. Heard the counsel for the parties. Considering 164 statements of prosecutrix and her age, application is allowed. Applicant be released on bail. 50,000 one surety. Obliged. Number 37. My lord, I am praying for 1 week time. As per dead zone after vacations. Number 38. After vacation, my lord. Same. Obliged. Number 39. Last date of hearing this honorable court, before this honorable court, my learned friend had taken some time to ascertain whether the complaint is in any case victim or witness of Raju Pali. Complainant is victim or witness in any case. My lord, ऐसा है केस ये कि हम न्यायिक अपरीक्षा में अन्य केस में थे, चुनाव के कारण हमको जेल में भिजवाया गया था। Yes, state. तो किसी ने किसी के ऊपर फायर कर दिया
और किसी को कोई मुलजिम बनाने के लिए प्रपोज अननोन पर्सन के नाम की FIR हुई। हमको इस केस में इम्प्लीकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम कि हम जेल से बाहर न निकलें, चुनाव में पार्टिसिपेट ना करें, और हमको एक्यूज बना दिया। ना तो कंप्लेंट हमारे किसी केस में विक्टिम है सर, और ना ही विटनेस है, और ना ही कोई गवाह इस केस में हमारे किसी केस में विक्टिम है, ना तो विटनेस है। ये स्टेट सर इसमें जो इनका आर्गुमेंट सर कल केस अलग है सर। एक्चुअली क्या है, जितने जो कंप्लेनेंट है और जो एक्यूज है, इन्होंने सर एक षड्यंत्र रचा एक संतोष यादव के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराने के लिए, और इन्होंने फर्जी अपने पैर में गोली, साथ में ही गोली मरवाई, और ये था कि अननोन के खिलाफ इनका रिकॉर्ड है। हाँ सर, रिकॉर्ड तो ये सब हिस्ट्री सीटर है सर, जेल में भी है, और जेल में ही सर थोड़ा सा देख लें प्लीज सर। इसमें कोई की उसकी बेल खारिज हो चुकी है पहले? नहीं, कोई की बेल नहीं खारिज हुई सर। खारिज हो चुकी? किसकी खारिज? इसमें बेल लगी है? नहीं सर, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम ही ने बेल फाइल की थी, तो आप चूंकि चालान की कॉपी नहीं थी, ये स्टोरी कुछ बता रहे थे तो हमने विड्रॉ कर लिया था सर। इसमें इन्होंने ये बताया था लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे सर। मैं छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ सर। खारिज हुई है? नहीं, राजू पाली की खारिज नहीं हुई सर, विड्रॉ हुई, देख लीजिए आप सर। हाँ तो वही मैं निवेदन कर रहा हूँ सर। ये आर्गुमेंट कुछ और कर रहे थे। इनका ये कहना था विक्टिम ने जेल में हमसे राजू पाली से मुलाकात की है, तो ये केंद्रीय जेल का कार्यालय का सर ये इसमें रिकॉर्ड लगा हुआ है, कभी कंप्लेंट ने हमसे मुलाकात नहीं की। मुलाकातियों का नाम देख लीजिए सर, हीरालाल सनाफ भगवान दास, रामजी सनाफ राजू, हीरालाल सनाफ भगवान दास, राजेश सनाफ सीताराम, साहिल पिता ललित, विनोद पिता गणेश, रामजी पिता राजू, हीरालाल पिता भगवान दास, हीरालाल पिता भगवान दास, तरुण पिता रितेश। अब दूसरी चीज, एप्लीकेंट हैज फाइल्ड फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 सर। सो फार क्रिमिनल हिस्ट्री इज कंसर्न सर, पूरे केसेस हमारे इक्विटल हो गए हैं, मात्र 2 केसेस चल रहे हैं सर। पुलिस स्टेशन मैंने उसकी भी कॉपी लगाई है सर। Counsel appearing for applicant submitted और that applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. Full stop. It is submitted that there is previous enmity. Therefore, applicant was made accused in the case. It is also submitted that initially FIR was lodged against unknown person. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate as well as government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that accused and complainant entered into a conspiracy to falsely implicate accused. Full stop. In this conspiracy, yes. सर मैं छोटा सा निवेदन करूं सर। Yes. संतोष जिसको बता रहे हैं, संतोष के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। इनकी कहानी कुछ और है। इनकी कहानी ये है साहब कि संतोष के रिश्तेदार अभिषेक और सोमू को एक्यूज बनाने के लिए, ताकि संतोष के ऊपर दबाव बनाया जा सके कि हमारे ऊपर हम समझौता कर लें। और ये देखिए साहब, कोई एक्यूज की स्टेटमेंट, कोई एक्यूज की बेल में अभिषेक और सोमू ने एफिडेविट दिया, सर्टिफाइड कॉपी है कि हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ना संतोष से, ना एक्यूज पर्सन से। सिर्फ हमको उसमें रिस्टेन करने के लिए चुनाव के दौरान हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। Falsely implicate one संतोष in the case. नहीं सर, संतोष को नहीं, अभिषेक और सोमू को। अभिषेक एंड सोमू को सर, संतोष के रिलेटिव सर इनका चालान ही है सर। चार्जशीट में वो अभिषेक और सोमू को, संतोष का रिलेटिव, संतोष को एक्यूज बनाने के लिए सब सर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। संतोष ने इनके खिलाफ FIR की थी सर, वो मामला पेंडिंग है। उसमें ये जेल में इन्होंने अपने साथियों को बुलाया, वहां मुलाकात हुई। मुलाकात में ये तय हुआ कि संतोष के रिश्तेदारों को किसी प्रकार में फंसाओ, तो इन्होंने अपने पैर में साथ में ही सब लोगों ने गोली मारी, और गोली मार के फिर अननोन के खिलाफ FIR दर्ज की। और ये राज तब तक खुलता है, इनको फंसाते, इसके पहले ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया। ये सब ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो ये इनके रिलेटिव्स को क्यों फंसाएंगे सर? इसमें संतोष के ऊपर प्रेशर पड़े, और डायरेक्ट संतोष के ऊपर करते सर, तो पुलिस को शक हो जाती है कि ये झूठा फंसा रहा है, इसलिए इन्होंने रिलेटिव को लेके किया है। ये पूरा आया इसमें CCTV में। कौन है रिलेटिव, कौन है? और इनका सर उस घटना दिनांक को सबका आपस में बातचीत जो टेलीफोन पे हुई है, पूरी जेल में हूँ पूरा। नहीं, जो बाकी लोग जो बाहर थे 7-8 एक्यूज, सबका CDR है सर, सेम इसमें आपस में बातचीत हुई है। और जो गोली लगी थी उसके पहले एक कंपाउंडर से इन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, एक कंपाउंडर से, कि जिसमें दर्द ना हो, उसका स्टेटमेंट है, वो उसको भी बताया। सर मैं तो जेल में हूँ, मैं तो बिहाइंड बार हूँ साहब,
और अभिषेक और सोमू का एफिडेविट है साहब कि कोई लेना देना नहीं हमारा इससे। To falsely implicate relatives of Santosh so that pressure can be put upon him to do compromise in the case. It is submitted that हम बेल पे हैं ऑलरेडी बेल पे applicant has misused, is abusing the process of law and also trying to influence the evidence in the case. In these circumstances, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant is a history sheeter with नहीं सर records. सर मैं विड्रॉ कर ले रहा हूँ, हिस्ट्री सीटर नहीं, मैंने पूरी कॉपी लगाई है साहब, सारे केसों में कुटल हो चुके हैं और हम बिहाइंड बार हैं। अगर आपकी मनसा ना हो बेल देने की तो मैं विड्रॉ कर ले रहा हूँ। इसमें रिकॉर्ड लगा सर 5 केसों में विड्रॉ 5 केस अभी भी लंबे। Government advocate submitted that applicant was involved in number of criminal cases and as many as 5 cases are registered against him. नहीं केसेस तो ज्यादा रजिस्टर्ड, इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड है सर, 13 केसेस रजिस्टर्ड हैं जिसमें कुछ में ये सब में कुटल हो 5 चुके अभी पेंडिंग। There are applicant is सर मैं विड्रॉ कर ले रहा हूँ, बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर ले रहा हूँ। At this stage, counsel for applicant prays for withdrawal of application. Prayer is declined. Application is dismissed. ये आपकी भी डिसमिस। आप कौन है? सर हमारा कोई आकाश पटेल है सर। आप राजू पाली हैं क्या? नहीं कुछ नहीं सर, आकाश पटेल है सर। आप आकाश? ये आकाश इनके कितने केस हैं? इनका रिकॉर्ड तो नहीं आया है लेकिन ये पूरी कॉन्फ्रेंसिंग में भी शामिल है, इनका भी आपस में बातचीत हुई है। बाद में देखेंगे, अभी तो दोनों साथ में रहिए, आराम आसानी रहेगी। एक भी केस नहीं सर। सर मैं पूरे जजमेंट में पेश कर देता हूँ, सब में कुटल हो चुका था। For applicant submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. Counsel for applicant prays for withdrawal. Prayer is allowed. Application is. सर मेरी भी विड्रॉ कर दीजिए सर। नहीं आपके तो बहुत सारे रिकॉर्ड। नहीं सर रिकॉर्ड नहीं, मैं सारे जजमेंट की कॉपी पेश करूंगा आपके समझ। सर मैंने लगाई भी है सब सारे जजमेंट कॉपी में। नेक्स्ट मेरे योर ऑनर में प्लीज टू परमिटेड टू विड्रॉ। नो दैट हैज बीन डिक्लाइंड। सर ये हमने पूरे जजमेंट की कॉपियां निकलवा ली है सर, ये जजमेंट। दिस नेक्स्ट 40 Lordship, the matter may kindly be taken up after vacation. As prayed, adjourned after vacations. My presence may be marked on behalf of. Yes. My presence may be marked. So and so appears for objector. My lord, the applicant is in custody since 3rd of October 2022. The allegation is that, my lord, the prosecutrix and the applicant eloped and they solemnized marriage also, my lord. And after that, the girl was recovered and this case was registered. What the is girl the age? Aged about 17 years, 1 month at the time of incident. already
ये सब तो कंसिडर किया जा चुका है। ये जो हॉस्टाइल विटनेस है इसके बेस पे आपकी पहले खारिज हो चुकी है। जी मानवर, तो कोई मानवर ये निवेदन ये था circumstantially- कि 20 महीने से हैं और निवेदन यह कि हम 270 देने को मानवर तैयार है और 5 केस ही और हमारे सीएम नेचर मानवर ये कोई केस 24 नवंबर को आपकी खारिज हुई है, उसके बाद क्या स्टेटस है ट्रायल का? डिले मानवर इसमें 2 ही गवाह हुए हैं मानवर इसमें और 20 महीने हो गए साहब और हमारे कोई सीएम नेचर केस नहीं साहब इसमें। जो आप लड़ाई बहस झगड़ा कर रहे हैं सब कंसिडर हो चुका है। लड़ाई झगड़ा केस साहब, बाकी हमारे कोई सीएम नेचर का केस नहीं साहब। Applicant has filed repeat application for grant of bail. 270 दिन Earlier application filed by applicant was considered on merits and has been dismissed. Earlier application bearing MCRC number 33435 of 23 was dismissed by order dated 24/11/23. Grounds which are being raised by applicant was already considered in said application and bail was declined. There is no change in circumstance. Repeat application is dismissed. मानवर डायरेक्शन Applicant is at liberty to file repeat application if trial is not concluded within period of 6 months. 20 महीने हो गए सर। 20 महीने हो चुके हैं। जी 20 महीने जेल में मानवर और वही 2 ही गवाह हुए फिर तो रिपोर्ट बुलानी पड़ेगी। जी मंगा लिया ये स्टेट रिपोर्ट मंगा बुला लेते हैं स्टेटस रिपोर्ट। कांट देने से लिखना स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट आफ्टर वैकेशंस। ये रिवीजन क्या है आपका? ये इसमें सब हमारे पर चार्ज नहीं बनता साहब इसका। चार्ज के अगेंस्ट में क्यों नहीं बनता है चार्ज? हमारे पर चार्ज इसलिए नहीं बनता साहब कि ये जो एफआईआर की गई मानवर इसमें ये आया है कि सब जो घटना बताया गया है मानवर इसमें 6/3 की बताया गया है। 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 फरवरी और जो भी कार्रवाई की गई 6 अप्रैल को की गई मानवर और जो गवाह बनाए गए जो पुलिस वाले मानवर वो भी उसी में बताया गया। स्टेट देख लीजिए 6/4 एफआईआर मतलब 6/4 की घटना है आफ्टर 4 वीक्स। नंबर 48 ये 482 पिटीशन लॉर्डशिप 30/11 को है अमेंडमेंट करने का। कि 498 हम ऊपर नहीं बनता ग्राउंड में मेंशन करना तो वो हमने मेंशन कर दिए। और 498 ये 482 है, ये बेल नहीं है। यस लॉर्डशिप बेल नहीं। इसको ठीक कर दीजिए, आपने गलत मेंशन किया है। नहीं सर हमने तो जो अमेंडमेंट कर दिया इसमें गलत आ गया लॉर्डशिप। बेल क्या इसको बाद में कंसिडर करेंगे लॉर्डशिप। नहीं रहने दो, लिस्ट बाद में देखेंगे। नंबर 49 is the 439(2) bail application. Reply has been filed. No, it's awaited lordship. Yes. Sir, I am praying for Passover 49 and 50. Senior is arguing before another bench. Say Passover. नंबर 50 time is here for Sir, नंबर 15. हिमांशु श्रीवास्तव Find the Passover. Passover. 51. I'm praying that Lord, I have just received all the judgment of acquittals. They are 20 something. We'll consider अभी तो Passover का रिक्वेस्ट है। जी। नंबर 52 संतोष सर। Lordship, this last hearing for call for the FSL report, Lordship. There are no eyewitness. No eyewitness, only circumstantial evidence, Lordship. Yes, state. अवेटेड है। कितना टाइम चाहिए आपको? Lordship, last date of hearing उन्होंने लास्ट चांस मांगा था Lordship। 25/9/2023 से कस्टडी Lordship। 1 वीक ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको दे दिया गया था। 4 वीक्स दिया था, 1 साल। इससे पहले भी आपने टाइम लिया है। Lordship, जो मटेरियल है उसको भेजा ही नहीं गया, मेरा ये सबमिशन है Lordship। Yes, what is on merits? Yes, applicant. Lordship, this application under section 302, 302, 201, 120 भी Lordship।
नो आई विटनेस लॉर्डशिप, ओनली इसमें कोई आई विटनेस नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लॉर्डशिप। आरोपी की जो पहली पत्नी है गणेशी बाई, उसका लड़का है आरोपी और माँ है आरोपी, दोनों माँ बेटे आरोपी हैं, पति तो हमारा है, और माँ बेटे के ऊपर अवैध संबंधों का शंका करता था पति। और जो स्ट्रैंगुलेशन है, पीएम में स्ट्रैंगुलेशन है, मेमोरेंडम के आधार पे नायलॉन की रस्सी इनसे जब्त हुई है, क्वेरी रिपोर्ट है, उसमें है कि इस रस्सी से जा सकता है। और किसने मारा है? लड़के ने। ये रॉबिन लड़का है क्या? रॉबिन लड़का है। रॉबिन लड़का है। डेड बॉडी वाज फाउंड इनसाइड द हाउस? नो लॉर्डशिप, ये किसी बॉडी लॉर्डशिप ये रोड पे मिली है लॉर्डशिप, कम घर से रोड पे ये डाल आए थे, घर में 2-3 किलोमीटर दूर कारित करके घर में गला दबा करके मार करके और एक्सीडेंट दिखाने के लिए ये रोड पे डाल आए थे। तो आपने क्या एविडेंस कलेक्ट किया? ये तो आप मेमोरेंडम के बेस पे बता रहे हैं। नहीं, मेमोरेंडम के बेस पे भी और स्टेटमेंट है उसके छोटे भाई के स्टेटमेंट में वो जा रहा था रास्ते में और उसको देखा तो उसने फोन किया। क्या देखा? बॉडी देखी। इनको ले जाते हुए तो नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। नहीं, ले जाते हुए तो कोई नहीं। भाई जो मेमोरेंडम का स्टेटमेंट है उसके बेस पे क्या एविडेंस कलेक्ट किया आपने? जो ये बोल रहे हैं ना घर से उठा के बाहर फेंक दिया, हाँ, तो क्या एविडेंस है इस चीज का? किसी ने देखा है? कोई नहीं देखा। आई विटनेस तो नहीं है। कोई निशान मिले हैं? कोई नहीं, निशान भी नहीं मिले। तो आपको ये कैसे पता कि घर में मर्डर हुआ है? घर में कुछ मिला है क्या? नहीं, घर से नायलॉन की रस्सी जब्त हुई। सिर्फ रस्सी के अलावा कुछ ब्लड स्टेन स्पॉट कुछ मिला है क्या आपको? रस्सी का तो आपने डीएनए के लिए भेजा नहीं, खाली नायलॉन की रस्सी से और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that he has falsely been implicated in the case. Only circumstantial evidence of memorandum is available against him. No other evidence is available which points towards the guilt of applicant. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that one nylon rope has been seized from the applicant which is used in commission of crime. However, FSL report regarding said FSL report is not available to show that rope was used in the incident. Full stop. Heard the counsel for the parties. Case of prosecution is based on circumstantial evidence and memorandum. Considering aforesaid circumstances, application is allowed. One surety 50,000. 53. Lordship, arguing counsel Sri Prameet Singh Thakur is not well. Kindly take up the matter in next week. Adjourned after vacations. Lordship. 54. इसमें लास्ट हियरिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड बुलाने के लिए ऑर्डर किए थे। Criminal records. Yes, state. लेटर तो गया है आपराधिक रिकॉर्ड के लिए, मतलब आया नहीं है। ये दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था, ये आरोप है इनके ऊपर। D.Ed प्रथम वर्ष की परीक्षा में ये आमर हुसैन के स्थान पर ये जो मोहम्मद सागिर है। और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नो मैडम, कोई रिकॉर्ड नहीं। 18/8 से जेल में। अगर स्टेट का है ये, डायरी में तो निरंक आया है क्रिमिनल रिकॉर्ड।
क्योंकि ये अदर स्टेट का है तो वहां से खुलवाना पड़ेगा, इस थाने में तो नहीं। This 471 is bailable. 420 is 7 years. 467 बनेगा नहीं. Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Counsel for applicant submitted that applicant is a student and as per prosecution story he had undertaken an exam on behalf of as a spurious candidate appearing on behalf of other candidate. Full stop. It is submitted that applicant is in jail since 18/8/23. Investigation is complete and charge sheet has been filed. No offense under section 467 of Indian Penal Code is made out against the applicant. Since there was no forgery of any valuable document. In these circumstances, other offences are punishable up to 7 years of imprisonment. Government advocate opposed the application for grant of bail. Third, the applicant has not forged any valuable security or will. Offence under section 471 is bailable. Offence under section 420 is punishable up to 7 years of imprisonment. Investigation is complete and charge sheet has been filed. Considering aforesaid circumstance allowed. 2 sureties, local sureties. 50,000. अदर एक्यूज की बेल जो हुई है ऑनरेबल जस्टिस विशाल मिश्रा साहब के यहाँ से हुई है। जो लास्ट ऑर्डर सीट है उसमें मैं पहुंच नहीं पाया था माय लॉर्ड, तो गवर्नमेंट एडवोकेट ने बोला कि अदर बेंच में जाएगा। वो ऑर्डर कर दिए कि रजिस्ट्री वेरीफाई करे और अदर बेंच में लगाए, लेकिन जो और कोई एक्यूज है उनकी बिल वहीं से हुई, उसी कोर्ट से हुई है। Yes, sir. Registry is directed to list this matter before appropriate bench as directed earlier. और एक मैटर 75 में भी है, वो भी सेम है। 2 क्राइम नंबर रजिस्टर्ड हुए थे, घटना एक ही है। वो भी उसमें भी एक जो वो वाला क्राइम नंबर है उसकी कुछ बिल विवेक अग्रवाल साहब के यहाँ से डिसाइड हुई थी, कुछ appropriate bench है। दोनों 75 में भी है। 75 में भी सेम कर दिया। Number 56. Lordship, this is the first bail application on behalf of the applicant. The offences are under section 294, 352, 304 of IPC. The applicant is in jail since 14/10/23. May I read the prosecution case, my lordship? Yes. आवेदक छोटू गौड़ सहित अन्य अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना तारादेही में अपराध क्रमांक 165-23 में धारा 452, 294, 304 के तहत अभियोग यह है कि आवेदक तथा उक्त अभियुक्तगण बटन गौड़ के मकान में प्रवेश कर गाली गलौज किया, उसकी लाठियों से मारपीट की जिससे उसकी बाईं आंख, सीना, दोनों पैरों की जांघ, पसली व गले में चोट आई और उक्त चोटों के कारण बटन की मृत्यु हो गई। My lordship, the incidence is of 24/9 and the FIR is lodged on 27 and the death is take place on 26th. The cause of death is not known, my lordship, and in the postmortem report, all injuries caused is simple in nature. My lordship, may I read the statement of his father, my lordship? He was present at the place of incidents. Yes. ने बताया कि काफी बूढ़ा हूँ, घर में रहकर ही घरों काम करता हूँ। दिनांक 24/9/23 दिन रविवार के दिन करीब 2 बजे की बात है। मैं और मेरा लड़का बटन घर पर थे। उसी समय हमारे गांव के काशी गौड़, शंकर गौड़, छोटू गौड़ प्रेजेंट एप्लीकेंट अपने अपने हाथों में लाठी लिए हुए मेरे घर के आंगन में आए और वहां खड़े होकर मेरे लड़के बटन को आवाज देकर घर के अंदर से घर के बाहर आंगन में बुलाया। तो मेरा लड़का बटन उन तीनों के पास आंगन में चला गया। जो शंकर, छोटू, काशी तीनों से गाली गलौज करने लगे और हमारे लड़के
से बोले कि तू हमारी लड़की को परेशान करता है, तो मेरा लड़का बटन बोला कि मैं क्यों परेशान करूंगा। इसी बात से लेकर छोटू गौड़ ने लाठी मारी, जो मेरे लड़के के दोनों पैरों की जांग में मुंदी चोट आई, तथा काशी ने लाठी मारी, जो लड़का बटन के सीने में मुंदी चोट आई। फिर शंकर ने लाठी में और ठूंसा मारा, जो बटन को बाईं आंख के ऊपर चोट आई। फिर छोटे ने लाठी मारी, जो बटन को दाहिने तरफ काखरी के नीचे पसली में मारा, जो चोटें आई। तथा काशी ने भी फिर लाठी मारी, जो उसे बाएं पैर के नारे में चोट आई, और तीनों मारपीट करके भाग गए। मौके की घटना मैंने देखी थी। मैं उस दिन, मुझे काफी बुखार चढ़ा था और घर पर कोई सदस्य नहीं ये था। स्टेट आई विटनेस है। आई विटनेस में किसी लॉर्डशिप, किसी के सामने मारा है, बस उनको हॉस्पिटल but हॉस्पिटल injury नहीं has लेके गए। injury has not been caused on any vital Any part vital of the body. कंट्यूजन है, पाँव में मारा है। कंट्यूजन है, अब्रेजन है, नहीं हाथ पैर से मारा है और पैर से कुचला है उसको चेस्ट पे। ये स्टेटमेंट में भी आया, इसलिए 302 ना बन गई 353 लॉर्डशिप इसमें आगे इन्होंने लॉर्डशिप ने स्टेटमेंट में ये भी बोला है, लेकिन इसमें नो डिफाइन ओपिनियन कैन बी गिवन अबाउट द केस ऑफ डेथ तीसरा एंड बीइंग प्रोसीजर। तो आई विटनेस से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है आपका। मिलॉर्डशिप, बट हमने और मिलॉर्डशिप ये जो इनकी जो डेथ हुई है, इसमें स्टेटमेंट भी आया हुआ है कि उस गांव में किसी को बताया था, लड़का बटन घर पे ही देशी रुखड़िया से अपना इलाज करता रहा। फिर आज सुबह 11 बजे लगभग, जब कितने दिनों बाद डेथ हुई है? 3 दिनों बाद मिलॉर्डशिप, 24 की घटना है और 26 की उसकी डेथ हुई है। 26/9। यस मिलॉर्डशिप। और मिलॉर्डशिप इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इंजुरीज आर सिंपल इन नेचर, उनने पैर में ब्लंट ऑब्जेक्ट्स के लगे। एंड व्हाट इज ओपिनियन इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट? ये कॉज ऑफ डेथ जो है, नो डिफाइन ओपिनियन कैन बी गिवन, नो डेफिनेट ओपिनियन कैन बी गिवन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। चोटें काफी सारी हैं बॉडी पे। व्हाट वाज द एज ऑफ डिसीज्ड? $38 years. Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that he is innocent and has falsely been implicated in the case. Full stop. According to prosecution story, applicant was armed with a lathi. Applicant does not have any knowledge or intention to cause death. Full stop. In postmortem report, also no definite opinion regarding cause of death has been given. Government advocate opposed the application for grant of bail. It is submitted that number of injuries has been caused upon the deceased by applicant and other co-accused persons who were armed with a lathi. Full stop. Injuries has been caused by them which resulted in death. Therefore, offence under section 304 is made out. In these circumstances, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant was not armed with any dangerous weapon at the time of incident. Injury has not been caused on any vital part of the body. कोई फ्रैक्चर है क्या? फ्रैक्चर भी नहीं। No fracture was. Swelling है, abrasion है, No fracture was found on the body, and injuries were found to be simple in nature. Considering aforesaid circumstances and also taking into account period of custody and fact that investigation is complete, charge sheet has been filed. Application is allowed 50,000 to shoot.
My lord, this is first application, my lord. Offences under section, my lord, 302 of the and 34 of the IPC and 202212 of the IPC, my lord. My lord, in this case, my lord, the entire prosecution evidence against these applicant, my lord, has turned hostile, my lord, in which I have been filed the entire deposition sheets. All are hostile. All are hostile, my lord. There are number of eight prosecution important witnesses, my lord. Yes. Including the eyewitnesses, brother of the complaint, deceased, except one allegation, my lord, that I have been my previous criminal record, my lord, of 302. That case was registered in the year of 2010, my lord. This is उसके बाद कोई केस नहीं. उसके बाद यही वाला है, my lord. ये स्टेट ये तीन. Yes. Main accused, the eyewitness is Chotu. Brother of the deceased, my lord. He is PW1, my lord. Hostile है. Yes, yes, my lord. Totally hostile, and he is categorically stated, my lord, कि मेरा भाई मैंने अपने भाई से पूछा कि कहीं चोट लगी, तो उसने बताया कि कोई चोट नहीं लगी. फिर मैंने मृतक रमेश को सुला दिया और मैं भी सो गया. दूसरे दिन अपने भाई रमेश से पूछा कि ठीक है, तो मेरा भाई कहा ठीक हूँ. फिर मजदूरी करने काम पर चला गया. मैं इसलिए पूछा कि कहीं कोई चोट हो तो नहीं लगी है. जब मैं शाम को मजदूरी करके आया तो भाई रमेश से पूछा कि खाना खाएगा, तो उसने कहा खाना नहीं खाऊंगा. तब मैं खाना खाकर सो गया. जब मैं सवेरे मैंने सुबह रमेश को जगाया तो जमीन पर ही सो रहा था. मैंने जगाया तो उसने शरीर जमीन पर लुढ़क गया. फिर मैंने लोगों को बताया. ये स्टेट और कुछ है. Eyewitness तो ये सोल. Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that all material witnesses in the case has been examined and they are hostile. Government advocate opposed the application for grant of bail and submitted that eyewitness of the incident, namely Chotu, is Chotu, full stop. Applicant has committed heinous offense of murder. Heard the counsel for the parties. Chotu eyewitness has been examined and he is hostile. Other 7 material witnesses has also turned hostile. Applicant is in jail since 25/7/23. Considering totality of facts and circumstances of the case, application is allowed. 58. But kindly given after vacation. As prayed, adjourned after vacations. Number 59. But there's a first bail act. Number 60. Worship, this is first bail application was under 439. Offense is under 326, 324 and other offences of IPC. But before I go into the FIR, I just want to fairly make a submission that the applicant, he was absconding since past 15 years.
Milord, Past 15 yes, 15 Milord. years. With the help of legal aid, Milord, I had the occasion to talk to him, and then Milord, there the explanation which he has furnished is that he's a laborer and he was working in a different village altogether since past 15 years. Now, Milord, just one more important aspect I just want to bring to the notice. I have filed the copy of the testimony of one of the witness. There it has come on record that the complainant, who is the only injured witness, he has passed away. And The date of incidents 15/10/2008. कितने co-accused हैं? plus two, there were two, Mathura and Raju. Mathura and Raju. Raju, he has been acquitted, Milords, in 2015 because the complainant has not supported the case with respect to him. Milords, this is, I fairly made a submission before your lordship that the complainant, he has passed away and he was absconding. कितना time हो गया आपको? Plus 3 months, and Milords, the one of the witness and the doctor, he has also been examined, Milords. I have filed the testimony on record. And he's a labor, your lordship, no previous criminal record as per my instructions. For the allegation. He's the principal accused. I am not denying that. To the stomach of the injured, my lord, by the knife. By knife? Yes, Milords. Yes. There's one penetrating wounds, 1 inch. As per the MLC, my lord, the injury has been found. Milords, any strict condition may be imposed, your lordship. If there's a breach, then Milords, the bail order may be cancelled automatically, Milords. Any strict condition may be imposed. He's a labor, your lordship. You are absconding. Milords, the reason which he has assigned is that he was working as a labor in different villages since past. That cannot Milords, be believed. certainly, Milords, this is something which I'm Milords bringing to the notice. Very long time. And Milords, I'll just make one more. Had he been sole accused, then That I would could have then believed certainly. कि आप दूसरे उसमें काम Now, कर in रहे fact, the other co-accused, he was arrested in 2013 and the trial got over in 2015 with respect to him, and he has been acquitted because the complainant has not supported the case with respect to him. No, just one more submission. I say that even if I go by what is there in the FIR or 161, now that particular evidence, it cannot be, Milords, made, can be used for making me and cannot be used for convicting me, Milords. That would not be a substantive evidence because now the complainant, he has passed away. There are eyewitnesses. Milords, Yes, sir. Eyewitness, no. injured witness also, my lord. Milords, he's the only injured. No, Milords, just. Applicant Milords, has filed. Moolan Adivasi is the only injured witness. Milords, I'm making a statement. It is there in the FIR itself. With respect to the present applicant, my lord, he's a. But it's an incorrect statement that there's only one witness that he's injured witness. Milords, he's the injured witness who was passed away. Complainant. Yes. Except complainant. And there's one person, Shankar, he says कि मैं घटना में बाद में जब मार चुका था. This is there in the FIR, Milords. I'll just read the FIR, page number 9, your lordship. Yes. Yes, page number 9. मजदूरी करता हूँ, 7 बजे की बात है, घर से गांव तरफ जा रहा था, जब देवी जी के पास पहुंचा तो रास्ते में राजू आदिवासी, मथुरा आदिवासी मिले, जिन्होंने जबरन हमें रास्ते में रोक लिया, बोले हार चलो। मैंने जाने से मना किया तो दोनों ने माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे तथा राजू आदिवासी ने मेरी कॉलर पकड़ ली और मथुरा आदिवासी ने छुरा मारा जो पेट के दाहिनी तरफ लगा, खून निकलने लगा। मैं चिल्लाया तो चाचा का लड़का शंकर आ गया जो मुझे घर ले गया। घर पर राजू मथुरा माँ बहन की गालियां दी, रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे, डर के कारण रात में रिपोर्ट नहीं की। भैया लाल आदिवासी, राम सेवक और शंकर आदिवासी पूरी बात बताकर रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। Shankar, he came subsequently, Milords. It is the admitted case of the prosecution itself, lordship. Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is falsely being implicated in the case. Who accused in the case, namely Raju, yes, Milords, has already been acquitted. It is submitted that complainant in the case has died. Full stop. There are no other witnesses in the case. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that applicant was absconding for last 15 years. There are other injured eyewitnesses in the case. No. Only one injured. Who has passed away. और eyewitnesses के अलावा कौन है? शंकर and Shankar came subsequently. बाद में आया वो क्या? उसके बाद में फिर भैया लाल और राम सेवक को बताया था। Yes. Ram Sevak, he has been examined. He said that I'm a hearsay witness. Milords, I have filed his testimony. PW1 is Ram Sevak. तो एक शंकर भर है, उसने भी मारते हुए देखा है। नहीं, शंकर जब वो इंसिडेंट हो गया उसके बाद शंकर आया, मैंने शंकर को बताया। It is there in the FIR. शंकर का स्टेटमेंट पढ़ी। 15/8
15/10/2008 के करीब 7 बजे की बात है। मैं गांव से घर जा रहा था, रास्ते में देवी जी के यहाँ पहुंचा, मूलन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर के इस बात पहुंचा तो देखा कि उसके पेट से खून निकल रहा था। मथुरा आदिवासी और राजू आदिवासी दौड़ते घर आए। मैंने उन्हें मूलन से पूछा तो उन्होंने बताया था कि गांव तरफ से आ रहा था, रास्ते में राजू आदिवासी मथुरा आदिवासी मिले। क्या लिखे? Heard the counsel for the parties, only injured witness and complainant has died. Shankar and other witnesses has not seen the incident. Full stop. Complainant has also died. Considering aforesaid, co-accused in the case has been acquitted. Applicant does not record है? नहीं. Applicant is not having any criminal records. Considering aforesaid circumstances, application is allowed. Applicant be released on bail. 50,000 one surety. Deeply obliged. फिर इसमें एडजस्टमेंट लगा है काउंसिल का, डायरी भी नहीं है। Adjourned. Is diary called? जी। Number 62. My lord, this is first bail application under section 439. My lord, offense is under section 305 of my lord IPC. My lord, the allegation is like this. My lord, as per the prosecution, that the present applicant and my lord, the deceased who was aged about 17 years 2 months. My lord, were in relationship from last 4 years. My lord, and my lord, prior to death of deceased before 2 months ago, the breakup took place between both of them. Later on, my lord, the present applicant had relationship with some other girl. And my lord, the deceased was distracted from the breakup of relationship, and my lord, ultimately she committed suicide. This was an allegation. My lord, an statement of Sikha Chokse. Yes. He is the friend of the deceased, my lord. Deceased is 17 years old. Yes. And my lord, the stated, my lord, ki after breakup of the, he is the mentally not. मैं read to statement of my lord Sikha Chokse. 12वीं पढ़ती हूँ, डायमंड वैली हाई स्कूल चांदामेटा से कर रही हूँ। She committed suicide because of breakup. Yes, yes. That is admitted. She was in depression. हाँ, depression. That is admitted. Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. Applicant was having love affair with the deceased, but later on there was breakup between them. Being depressed, deceased has committed suicide. Applicant has not abated suicide of a minor girl. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail and submitted that offence is serious in nature. And because of applicant, deceased had committed suicide. Heard the counsel for the parties. Considering the fact that deceased was depressed due to breakup of relationship with applicant and she has committed suicide will not amount to abatement of suicide of a minor girl. Application is allowed. Applicant be released on at this stage. At this stage, it appears that. Lordship, I am praying for Passover. Senior Counsel Mr. Dutt has to address this court. Lordship. Passover. 64, 65, हाँ, 65 भी पास हो, 64, 65 also. Number 66. In this lordship, I am seeking 1 week time, lordship. Adjourned as prayed. ये amendment क्या करना है आपको? लॉर्डशिप उसमें क्लॉज 7 में एड्रेस गलत डल गया। एड्रेस इज नॉट। IA नंबर so and so is allowed. ये चेंज ऑफ काउंसिल किसकी है? लॉर्डशिप वो प्रीवियस काउंसिल के लिए फाइल हुई है, अभी नया वकालतनामा नहीं आया लॉर्डशिप। IA number 27482 of 23 is allowed. Necessary amendment be carried out within period of 1 week. ये चेंज ऑफ काउंसिल किसका है? आपका नहीं है? सर ये नंबर 2953223 चेंज ऑफ काउंसिल। लॉर्डशिप प्रीवियस काउंसिल की तरफ मतलब के लिए फाइल हुई है, मैं अभी After vacations. Number 67.
My lord, in this case, this is second bail application under section 439 of CRPC. My lord, first was dismissed in non-appearance of the counsel Yes. on 5/10/2023, my lord. No one application has been decided on merit on behalf of Yes. Mike John, my lord. My lord, in this case, my lord, as per prosecution story, my lord, एनसीबी की क्षेत्रीय इकाई इंदौर के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए घटना दिनांक 25/5/2022 को सूर्या होटल इटारसी पहुंचकर 3 महिलाओं को पकड़कर उनके कब्जे से अवैध स्मैक 21 किलोग्राम जब्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की। इसके बाद एनसीबी के द्वारा मुख्य आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर 2 अन्य व्यक्ति एनजी महिला और लालरेम रिवाता उसके पति दोनों को गिरफ्तार करते हुए केंद्रीय जेल बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एनजी और लालरेम रिवाता के मेमोरेंडम के आधार पर माइक जॉन को प्रेजेंट एप्लीकेंट को आरोपी बनाते हुए केंद्रीय जेल बेंगलोर से 19/9/2022 को गिरफ्तार किया गया और इस केस में उनको माननीय You were arrested from jail. यस फ्रॉम जेल में In earlier. वहाँ भी एनसीबी बेंगलोर इनको पहले हेरोइन के लिए पकड़ा था, फिर एमपी पुलिस ने उसमें मेमोरेंडम में गिरफ्तार किया था उस केस में बेंगलोर। वैसे भी सेकंड ऑफेंस हो गया। Presumption is also there. ये लोग गलत आदमी को पकड़ के ले आए हैं। इनको पकड़ना था असली अपराधी माइक जॉन को पकड़ना था और ये लोग जो है इस केस में लीपापोती करने के लिए प्रेजेंट एप्लीकेंट को बेंगलोर कोर्ट से पकड़ लाए हैं। देखा फोटोग्राफ। इनका कहना है कि प्रेजेंट जो माइक जॉन है ओरिजिनल अपराधी है जो तो माइक जॉन है उसको ये लोग जो असली अपराधी है वो जो 3 मुख्य आरोपी हैं जिनसे स्मैक जब्त हुआ था वो विक्टोरिया फॉल नाइजीरिया में उन लोगों के साथ घूम रहा था और उसके फोटोग्राफ उन मुख्य आरोपियों के और लालरेम रिवाता के मोबाइल में थे। तो वो उस व्यक्ति को ये फोटोग्राफ इन्होंने पेश किए हैं। इसमें ये पेज नंबर 347 में लगे हुए माय लॉर्ड। तो ये जो फोटोग्राफ हैं ये व्यक्ति और जो इस केस में आरोपी इन्होंने बेंगलोर से गिरफ्तारी की है वो व्यक्ति दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और फोटोग्राफ से क्लियर दिख रहा है। ये इन्होंने जो चालान पेश किया है ये उसका फोटोग्राफ है। उसमें ये व्यक्ति जो है थोड़ा ये जो व्यक्ति है ये अलग व्यक्ति है और जो व्यक्ति फोटोग्राफ में महिलाओं के साथ नाइजीरिया में फोटोग्राफ में है व्हाट्सएप में जो उन्होंने निकाला है वो व्यक्ति दोनों अलग अलग व्यक्ति। मैं फोटोग्राफ आपके सामने रखना चाहूंगा। समाचार ये फोटोग्राफ उन्होंने व्हाट्सएप में जो महिलाएं पकड़ी गई है इटारसी से उनकी मोबाइल में विक्टोरिया फॉल में होटल में वहां पे तफरी करते हुए फोटोग्राफ आए हैं और ये जो जिस व्यक्ति को प्रेजेंट एप्लीकेंट को वो व्यक्ति अलग व्यक्ति है जिसका फोटोग्राफ इन्होंने चालान में पेश किया है। वो जो व्यक्ति होटल में उन महिलाओं के साथ है माय लॉर्ड उसकी नाक लंबी है माय लॉर्ड और जो एप्लीकेंट को जो उन्होंने आरोपी बनाया है बेंगलुरु कोर्ट से उसकी नाक चौड़ी है और माय लॉर्ड मैंने इसको अच्छे से कंफर्म किया है। प्रेजेंट एप्लीकेंट को सिर्फ मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी बनाया गया है। प्रेजेंट एप्लीकेंट से कोई भी कॉन्ट्राबैंड जब्त नहीं किया गया है। ये इनके अगेंस्ट एविडेंस क्या है फोटोग्राफ के अलावा? कोई एविडेंस नहीं है इसके इसमें। ये तो लालरेम रिवाता। ये एप्लीकेंट के अगेंस्ट एविडेंस क्या है? यह कि दिनांक सो एंड सो को माननीय एनडीपीएस कोर्ट बेंगलोर में जाकर अनुसंधान के द्वारा मादक पदार्थ के प्राप्त करता प्रेजेंट एप्लीकेंट माइक जॉन कथन जेल में जाकर दर्ज करने व आपसे गिरफ्तारी करने की अनुमति न्यायालय से ली गई। यह कि दिनांक 22/22 को आरोपी माइक जॉन को 4 दिनों के एनसीबी आरक्षण
अभिरक्षा में लिया गया और मेडिकल दस्तावेज दिए गए। एक आरोपी माइक जॉन के पास उपलब्ध मोबाइल नंबरों में उपभोक्ता के विश्लेषण किया था कि आरोपी के एक मोबाइल नंबर जयप्रकाश मंडल फरीदाबादी निवासी के नाम पर है। इसका मैं बयान पढ़ दूं। Only memorandum of co-accused. No. Yes. इनका ऑन रिकॉर्ड हुआ है। Yes. जो को-एक्यूज्ड है जिनकी बेल डिसमिस हुई है उसी ने इनका नंबर लिया तो इनका नंबर यहाँ पाया गया। जो इनसे जब्त हुआ वो नंबर इनके पास मिला है। Yes. He is the part of the charge sheet also. The above mentioned ladies, namely Lalrem or so and so, carried the luggage, traveling baggage containing draft from the Zimbabwe to Bangalore, India, as per my instruction. He is accepting in his ban also, my lord. And further to deliver the same drug to Delhi to me and on my direction. The above said ladies also. And so my mobile number is 9560073929. इनसे कुछ सीजर हुआ है क्या? Yes sir. नहीं, कोई सीजर नहीं। इनका सीजर है ना? क्या सीजर? बेंगलोर वाले एनसीबी ने ऑलरेडी इनको सीज किया था पहले हेरोइन में। वो भी मेमोरेंडम। नहीं वो तो ऑलरेडी ही वाज अरेस्टेड फर्स्टली बाय द एनसीबी बेंगलोर। भाई जब आपने अरेस्ट किया तो आपको क्या एविडेंस अनर्थ हुआ मेमोरेंडम पे? ये जो एक्यूज्ड है उनके बयान पे इनका नाम आया ना, फिर इसके वो लिया गया, इनका मोबाइल नंबर ही पाया गया। इसमें ना पाया गया होगा मोबाइल नंबर, तो क्या फर्क पड़ता है? इनसे आपने कुछ कॉन्ट्राबैंड वगैरह सीज किए क्या? अरेस्टिंग के बाद कुछ एविडेंस मिला है? Only memorandum was given that contraband was obtained from the applicant. फिर आपने एप्लीकेंट को जाके बेंगलोर में अरेस्ट कर लिया, उनसे क्या मिला है आप जिससे इनका कनेक्शन स्टैब्लिश हो? रिसीवर इन्होंने तो सबसे मंगवाया था ना, और वो लोग ये बेंगलोर में जेल में थे। Who is receiver? ये प्रेजेंट एप्लीकेंट में। लेकिन ये ऑलरेडी रिसीव करने के पहले बेंगलोर एनसीबी द्वारा इसके प्रीवियस ऑफेंस में प्रीवियस हेरोइन में पकड़े गए थे, तो ये उनसे ले नहीं पाए। ऑल आर कनेक्टेड, सभी ने इनके जितने भी 5-6 हैं सभी ने इनका नाम लिया है। मैं उसका बयान पढ़ देता हूँ। जो एविडेंस में आपको क्या मिला? कोई इनकी बातचीत मिली है? नहीं, कोई मोबाइल नंबर भी कनेक्शन नहीं। इनका कॉल रिकॉर्ड में है ना मैडम? कहीं नहीं। Applicant has filed second. Not 1 minute. Yes. Just give me. Second application under section 439 police station offences. Counsel for applicant submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. It is submitted that 3 women were arrested in Itarsi with contraband substances. Said women accused persons has given a memorandum that applicant that they were to supply contraband articles to the applicant. On basis of said memorandum, applicant has been arrested. Full stop. It is submitted that except memorandum, no other evidence against the applicant is available. Counsel appearing for NCB submitted that applicant is the person who is called the contraband and same is to be supplied to him. Applicant is having criminal records and previously also he is involved in offense under NDPS Act. Full stop.
इससे क्या होगा? सर ये कॉल रिकॉर्ड का हमको डिटेल है सर, ही इज इन्वॉल्व इन द प्राइमा फेसी इन्वॉल्व इन दिस केस। नहीं, ये तो इनके सिर्फ बातचीत है फोन पे, या फोन नंबर मिला है आपको? कोई फोन नंबर नहीं बेंगलोर हमारा। एनसीबी द्वारा ऑलरेडी अरेस्ट है ही नहीं, हम तो बेंगलोर जेल से लाए हैं इनको, दे आर नॉट अरेस्टेड ऑन द स्पॉट। कोई फोन नंबर हमारे नाम से है ही नहीं, टॉकिंग भी हमसे नहीं हुई। जो मोबाइल नंबर आपने पेश किए हैं वो 3 अलग अलग व्यक्तियों के नाम से है, राजमोहन के नाम से है और विजय के नाम से और दूसरे किसी के नाम से है। प्रेजेंट एप्लीकेंट के नाम का कोई मोबाइल है ही नहीं, टॉकिंग भी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है माय लॉर्ड की ये जो सॉरी ये जो फोटोग्राफ है ये ओरिजिनल माइक जॉन है, और जो फोटोग्राफ इन्होंने मोबाइल के उसमें से निकाला है वो फोटोग्राफ, उसकी नाक लंबी है, इसकी नाक बहुत चौड़ी है माय लॉर्ड, और ये दोनों अलग अलग फोटोग्राफ है। प्रेजेंट एप्लीकेंट को जेल में तो दूसरे को हम पकड़ेंगे ही। प्रेजेंट ऑलरेडी बेंगलोर जेल में प्रीवियस ऑफेंस में अरेस्टेड है। ये तो आपने क्या अनर्थ किया, इनसे कोई एविडेंस मिला क्या? सिर्फ नाम ही भर तो है मेमोरेंडम पे। अगर फर्स्ट ऑफेंस में तो ऑलरेडी ये इनमें जेल में ही है ना ये। हाँ, तो वो फर्स्ट ऑफेंस में होंगे जेल में। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड ऑफेंस, जो आपने इन 3 इनको पकड़ा है वुमेन्स को, ये नारकोटिक सब्सटेंस इनको देने जा रही थी। बाकी जो को एक्यूज्ड है सभी ने इनका नाम लिया, दैट्स व्हाई। और फिर मोबाइल नंबर जो उन्होंने दिया, जो जिसकी डिसमिस हुई है, उनका मोबाइल नंबर वो पाया गया। प्राइमा फेसिया तो ही इज इन्वॉल्व इन दी। वो सारे जो स्टेटमेंट है माय लॉर्ड वो सब अब पुलिस अभिरक्षा में लिए गए हैं और लाल रैम रुवाता से लिए गए हैं। प्रेजेंट एप्लीकेंट के भी जो इन्होंने बताए हैं मेमोरेंडम, वो सब पुलिस अभिरक्षा में लिए गए। रक्षा में तो लिए जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो पुलिस अभिरक्षा वाले जो स्टेटमेंट हैं वो मान्यता नहीं रखते एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। तो एनडीपीएस सेक्शन 67 में स्टेटमेंट उसमें लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसकी जो कॉल डिटेल है सीडीआर वो सब एप्लीकेंट के नाम से। इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है? यस। कहाँ है बताइए? उसमें सब बयान को स्लिप लगी हुई है, पेज 284 में 284 ऑनवर्ड्स, 285 में, पेज 285। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये पुलिस अभिरक्षा में लिए गए, एनसीबी की अभिरक्षा में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये जो है स्टेटमेंट ये मान्यता नहीं रखेंगे अंडर एविडेंस एक्ट। जजमेंट हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड। वो इस आधार पर कि अगर कॉल डिटेल आपको मिल गई हो तो, जब हमारे नाम से मोबाइल नंबर है ही नहीं, हमारी कोई टॉकिंग हुई नहीं, और वो सारे सीडीआर कॉल डिटेल रिपोर्ट दूसरे व्यक्ति से टॉकिंग हो रही है, राजमोहन से हो रही, विजय से हो रही और एक अन्य व्यक्ति से, उनको पकड़ो आप। इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर आल्सो एक्सेप्टिंग इट। ये तो आपका आरोप है, यदि एलिगेशन है आपका। he'll granted bills, he will be expunged। ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने खुद उसका पता दिल्ली का लिखा है, कहीं नहीं लिखा कि विदेशी रहता है वहाँ। आपने कहीं नहीं लिखा कि रेंटल पे रहता है या विदेशी आदमी।
क्या लिखा? Under NDPS Act, his statement was recorded by his voluntary statement was recorded by Intelligence Officer Narcotics NCB, Indore MP. Applicant is also having one more criminal antecedent. In these circumstances, he may not be enlarged on bail. Heard the counsel for the parties, applicant is married at Mizoram and his wife is from said place. Other three persons who were caught at hotel from Itarsi also belong to same state and they were arranged for drug trafficking. They have brought the drug from Zimbabwe and was carrying the same to the applicant. Applicant was arrested in another crime by Narcotic Control Bureau, Bangalore. Full stop. Said women who were caught at Itarsi is said to have been arranged by one Lal, क्या नाम है इसका? लाल रेम Alias NG, wife of Hal Ram Ruwata of Aizawl, Mizoram. Full stop. There is presumption of guilty mind. माय लॉर्ड, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं जो Counsel उन्होंने for the applicant ऊपर लिखिएगा submitted that a person who has been arrested is not in fact is non-John Meg John, but some other person who has been arrested under some misconception. Said facts is to be considered at the time of trial whether these two persons are same or not. Presently, there is evidence and statement of applicant recorded by NCB and his connections with drug traffic. And in connection with drug trafficking, he has earlier also arrested by NCB Bangalore, considering a forfeit माय लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है अगर जैसे वहां से बरी हो जाता है होशंगाबाद कोर्ट से तो ये उसकी जेल तो बेकार हो जाएगी. Dismissed. ये जेल तो बेकार हो जाएगी माय लॉर्ड पूरी, जो इन्होंने उसको कस्टडी में रखा है. अगर वो बरी हो जाता है, ये आपको यदि कोई व्यक्ति बेकसूर है तो उसको जेल में कैसे रखा जाता है? Mobilize. Number 69. 68. 60 pass over. My lord, allow that. Yes. Seat application filed predominantly, my lord, on the grounds of delay. 16. I'm in custody since about 4 years and 2 months. 4 years and 2 months. My lord, lordship had on the last date called for the status report, that is 1/12/23. The order. Previously, my lord, were kind enough to grant. There are 3 men accused, my lord. All the other 2 have been granted bail on the same ground that out of 22 witnesses, about 13 were examined. Those orders I have also annexed. Applicant has filed. Second application under section 439 of Code of Criminal Procedure for grant of bail. Counsel appearing for applicant police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is in jail since 16/10/19 for about more than 4 years. For more than 4 years, and there is no progress in trial. There is delay on part of prosecution in conduct of trial. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail and submitted that offence committed by applicant is heinous in nature. Heard the counsel for the party, status report has been received from
Principal District Judge Singrauli. As per said status report, only case was listed as many as 27 times, and on said dates, only 5 witnesses were kept present in court for examination. क्या लिखा है? Listed 27 times. 13 witnesses has already been examined. There are 21 witnesses to be examined in the case. Full stop. From report which has been sent by the trial court, it appears that there is delay on part of prosecution in conduct of trial, and witnesses were not kept present before court for examination. Applicant is in jail since last 4 years. Considering aforesaid facts and circumstances, application is allowed. Applicant be released on bail on furnishing personal bond 1 surety. Number 69. As prayed, adjourned. Number 70. Like the second deliberation, first deliberation has been withdrawn. Yes. This is just one thing. सर लास्ट टाइम सर रिपोर्ट बुलवाई गई थी सर, क्राइम रिपोर्ट 2023 की। क्या? इसके लिए नहीं वो तो मैंने बता दिया। उसके बाद 2023 का सर इन्हीं ने पेश किया है कि 2023 के 2 केस हैं, उसकी रिपोर्ट आपने निकाल की थी आधा सीट में, उसकी रिपोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल केस तो है ही इनके बहुत सारे, 27 केसेस आर देयर। हमने पेश किए हैं सर, 10 केस उसमें 10 केस उसमें जो है एक साथ 16 के, हम 4 केसों में बरी हो गए हैं। और मेरिट देख लें साहब, ऑन मेरिट्स हमारा कहीं FIR नाम नहीं। 45 दिन बाद हमारे नाम आते कि साहब ये भी थे, लाभदार भी है, वो सब बहुत पुराने, सब खत्म हो गए हैं। 110 हमें एक भी चीज छुपाई नहीं है हमने। वो नाम कब आया है? 1.25 महीने बाद। And what is the date of incident? 21/4/2023। और जिसने FIR लिखा है उसका भी स्टेटमेंट 22/4 को हुआ है, उसने भी नहीं लिया 161। You were not named. हाँ बिल्कुल नहीं हमारा नाम। ये मैं देहाती नॉलेज पढ़ के बता देता हूँ। कब आया आपका नाम? 15/6 को और 29/6 को। ये किसने लिया है? एक और इंजर्ड विटनेस था, उसने लिया है, बता रहा हूँ सर। चंद्रभान सिंह के स्टेटमेंट में है 19/6 को एक स्टेटमेंट हुए हैं, 19/6 को जो है पदम सिंह ठाकुर के स्टेटमेंट हुए, उसमें भी इनका नाम आया हुआ सर। लाल सिंह के स्टेटमेंट में भी है सब 29/6 को, बस एक करीब 2 महीने का, 2 महीने बाद 29/4 का हमारा नाम नहीं है। सभी मैं सब पढ़ के बता देता हूँ सब। जो इंजर्ड है वो राम प्रसाद है, और एक इंजर्ड जितेंद्र जिसने FIR लिखाई, और FIR लिखाने के बाद उसका जो दूसरे 22/4 को स्टेटमेंट हुआ उसने कोई नाम नहीं लिया। एक इंजर्ड है राम प्रसाद। यस। और राम प्रसाद ने जो स्टेटमेंट है वो 15/6 को है। यस। पूरे 2 महीने में 5 दिन पहले 25। ये मैं पढ़ रहा हूँ। इन्हीं गाड़ी में उतरे और दस्सू भैया को कसना लोधी ने लोहे की राइजर से, संतोष बच्चा ने लोहे की राड से, नीतू गोलू लोधी और लाठी से, परसू लोधी ने बेसबॉल डंडे से, राजेंद्र लोधी ने लोहे के राइजर से। तो सबके नाम हैं, उसमें से 2 आपने छोड़े, 5 लोग डीजी द्वारा छोड़े गए। इसी आधार पर कि इनको 2.25 महीने बाद नाम। हम इनिशियली किस के नाम है? हाँ इनिशियली बता रहा हूँ। 22/4 को 22/4 को बता रहा हूँ।
सर इनिशियल ये हैं पुस्सू लोधी, राजेंद्र लोधी, संतोष बब्बा, गोलू लोधी और सुरेंद्र लोधी। इसका बता रहे निश्चित रहिए, नहीं करूँगा। उम्मीद करो। यस और साहब हमारा आपराधिक रिकॉर्ड है, मैं आपसे एक मैं प्रार्थना करता हूँ, मतलब ऑप्शन नहीं, हम हफ्ते में एक दिन हम हाजिर होंगे थाने में, और अगर हम कोई अपराध में फंस जाते जो आप जमात दें हमको, वो जमात ऑटोमेटिक कैंसिल मानी जाएगी। यस बताइए क्या सबमिशन ये है सर, केस इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया सर, विटनेस की घटना रात की थी, उसके बाद जब रिपोर्ट हो गई सबके नाम आ गए, उसके बाद यहाँ एसपी साहब ने शिकायत की, जो भी हुई एसपी साहब ने केस ट्रांसफर कर दिया बिड़ाघाट में, ये लोग सब गए गवाह पर रिकॉर्ड नहीं किए बयान सर, ये है सर डीएलटी। और ये आप देखें इसमें आपने लास्ट टाइम बोला कि जो डायरी वहाँ पर ट्रांसफर क्यों हुआ, इसके बारे में सब कही, अब क्योंकि डायरी हमारे पास है नहीं, क्यों ट्रांसफर हुआ, एसपी की डायरेक्शन से सर, जबकि थाना जहाँ पे था, जहाँ पे सब गवाह अवेलेबल हैं, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, भिड़ाघाट कोई आया नहीं सर, बार बार भी गए तब भी जब ये स्टेट डायरी बुलाइए, क्यों ट्रांसफर किया? हाँ उसके बारे में सर वेरीफाई कर ले सर। हैं? मैं पता कर Government advocate appearing for state press for short time to inform court why case was transferred from police station. Belkheda to police station Belkheda to police station Bedaghat. Full stop. Counsel for applicant has submitted that date of incident is 21/4/23 and applicant has not been named in FIR which was lodged on next day, that is on 24/4/23. 5 persons were named in FIR, namely Pussu, Rajendra, Santosh, Golu and Surendra. Applicant was named after long delay, that is on 15/6 and on 29/6/23. Full stop. Applicant was implicated as an afterthought. Full stop. In these circumstances, he may be released on bail. List matter after 1 week, 2 weeks, after 2 weeks, to ascertain the reason why Superintendent of Police has transferred the case. Week commencing. Week commence first week of January. Week commencing देखो कब का आ रहा है? 8/1. Number 71. ये सेकंड वेल एप्लीकेशन है, उसकी आरिफा बेगम 72 इसमें लास्ट अर्लियर वेल एप्लीकेशन हुई थी 2 महीने पहले लास्ट और लिबर्टी दिया था आपको आरिफा बेगम को 6 महीने का, तो 11 अक्टूबर का, बट लास्ट जो बेसिस ऑफ द मर्सी ग्राउंड और उसकी लड़की जो है लास्ट की 90% ब्लाइंड है लास्ट, और उसका हस्बैंड भी लास्ट जो है, ये तो सब पहले आर्गू हो चुका। हाँ जी आर्गू हो सकता था, आपने बोला था कि वो हस्बैंड का वो पेश करो, आर्गू तो मैंने पेश किया है लास्ट। पेश किया है लास्ट, ये जो शाकिर अली है एप्लीका नंबर क्या फाइल किया है? फाइल ये किया है पेज नंबर 3 है, शाकिर अली, आपने बोला इदरीश अली इसका पति कैसे है, उसमें वो लिखा है, तो शाकिर अली जो एप्लीका नंबर 1 था लड़का है, 3 से 4 बी में वो भी बंद है, मेन एक्यूज यही है, उसके पति पिता का नाम इदरीश अली है, और पेज नंबर 4 में विद्यार्थी नशीन बेगम इदरीश अली, नसरीन बेगम जो लड़की ब्लाइंड है, एक आंख से है, एक खुली दिख रही है, 90% लड़की, ये देखो तुम्हारी फोटो जो लगी है, ये फोटो लगी आरिफा बेगम इदरीश तेरा अच्छा का डॉक्यूमेंट है। ये स्टेट मैरिट्स में क्या है? मैरिट में लड़की कॉमन है, सभी के खिलाफ है मालिक। 164 के स्टेटमेंट भी हुए हैं, 164 के स्टेटमेंट में आया है, मैं मर्जी से बयान देने आई हूँ। करीब 9 माह पूर्व शाकिर अली पिता सिकंदर के साथ हुआ विवाह, करीब 2 माह तक अच्छे से रखे, इसके पश्चात विवाह के तीसरे महीने से मेरी बेटी की सास आरिफा नंद सुमैया फिरदौस में झगड़ा हुआ। झगड़े के कारण मेरे दामाद शाकिर ने मेरी बेटी को मेरे घर लेके आया था। 2 दिन बाद
हम लोगों ने बेटी के ससुर उनके परिवार वालों को बुला करके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों इकबाल मीर साइज बुला करके परिवार समझौता करवाया था। बेटी एक सप्ताह में बुलाने पर मेरे दामाद शाकिर अली ने लेकर आया था। घर गए तो उसके आगे है मतलब उक्त सभी बातें मेरी पत्नी ने मुझे बताई थी। पहली बार जब लड़की ने 10,000 रुपए दिए थे, 15 दिन बाद 15,000 रुपए दिए थे। शाकिर ने कहा था कि हम भाड़े की दुकान ले रहे हैं, इसके लिए दुकान सब कुछ अच्छा चल जाएगा। 4-5 महीने बाद मेरी बेटी तस्सु ने बोला कि हम भाड़े के मकान अलग रहेंगे, अपने पिताजी से 50,000 रुपए लेके आओ। बेटी घर आकर ये बताई थी लोगों के साथ मुझे कॉमन एलिगेशन कुछ सभी। Applicant has filed second application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is an old woman aged about 62 years and she is in jail since 4/7/23. Investigation is complete and charge sheet has been filed. On the general allegations of demand of dowry and harassment is made against the applicant. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail and submitted that there is allegation of demand of dowry and harassment. Heard the counsel for the parties. Applicant is an old woman aged about 62 years. General allegations of demand of dowry and harassment is made against her. Investigation is complete and charge sheet has been filed. Considering aforesaid circumstances, application is allowed. 50,000. One surety. Trial court. Number 72. Well, this is the second page of the other bail if they were dismissed has not been referred to file. Page number 9, my lord, counsel appearing for the applicant paid for withdrawal of the bail have been referred by the repeat application after examination of Nathu in the court, my lord. Nathu is examined. Nathu. 4 witnesses examined. Nathu is examined. Page number 42, my lord. He did not support it to the prosecutor case. ये स्टेट ये एक ही आई विटनेस है ना? टोटल 4 है लास्ट सीन टुगेदर के लास्ट सीन के 3 विटनेस हो गए सर. 3 विटनेस हो गए. All of them are hostile. This is by people. Real witness actually he can't take a real witness to committed murder by the other person, my lord. And the dead body was फेंक दी करके से रोड नदी के किनारे. उसके बाद में 4 बात मिली थी. तो ये नत्थू ने देखा था कि रात में ट्रैक्टर में ले जा रहे हैं, वो ट्रैक्टर में ले जाते हुए ये बात नत्थू का स्टेटमेंट हो गया. आप भी प्रेजेंट थे ट्रैक्टर पे? ना, ट्रैक्टर पे 4 लोगों को बताया कि ले जाते हुए देखा पर मारते हुए किसी ने नहीं. 4 लोग कौन कौन है? एक है सर नत्थू, एक गायत्री नत्थू और एक और है राजा यादव. कल्याण लोधी, पर्वत लोधी, मजले रामजी लोधी, छोटे करण लोधी, ये सभी बाखर से अलग अलग बने घरों में रहते हैं. इन तीनों भाइयों ने, मेरा बड़ा भाई प्रवीण लोधी, मंजल लोधी, छोटा चाचा करण लोधी बहुत दारू और गांजा पीते हैं, दिमाग चढ़ाता है. ये मेमोरेंडम है ब्रजेश लोधी का, उसमें इन सभी के उसमें आए हुए हैं. ये सबके भाई ये नत्थू ही है ना मेन, जिसने लास्ट सीन नंबर 40 बोला है. नत्थू के अलावा और कोई विटनेस है क्या? नत्थू एंड राजा. एंड राजा is coming page number 40 my lord. Both of them are hostile. Both are. And including applicant has filed second application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is made accused on basis of circumstantial evidence. 2 witnesses Raja and Nathu is said to have seen the applicant along with other persons carrying the dead body for its disposal. Full stop. It is submitted that said witnesses has been examined and they are hostile in court. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate opposed the application for grant of bail and submitted that offence is heinous in nature. Heard the counsel for the parties. Case is based on circumstantial evidence. Material witnesses has been examined and they are hostile. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. 50,000 one surety. इनका रिकॉर्ड है? Number 73. This is the second bail application under section 439.
First was allowed, my lord, on the condition of applicant will deposit an amount of 94 lakhs, my lord, before CGM court Katni after a period of 3 months, my lord. But my lord, he failed to deposit it, and on 4/10/2023, my lord, he surrendered before the court, my lord. आपकी एंटिसिपेटरी हुई थी क्या? No, my lord. 439. 439. Yes. My lord, your charge sheet has been filed, my lord. And we After deposit. 3 months you surrendered. My lord, it is a condition, my lord, conditional Yes, order. yes. So you surrendered after release. My lord. After, my lord, I have deposited 10 lakh rupees. This is the receipt, my lord. Only 10 lakhs. 94 lakhs के का embezzlement है. 94 lakhs का, my lord, as per the agreement, my lord, हमने चेक उनको दिए थे. उनको चेक के थ्रू पेमेंट करनी थी, मगर वो चेक न लगाने के बजाय उन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेन करी एज पर द अग्रीमेंट, my lord. And all the checks is the part of charge sheet, my lord, agreements, my lord. ये स्टेट एप्लीकेंट का क्या रोल है? मतलब ये एक फर्जी SMS दिखा करके कि उसको एक टेंडर मिला है स्वास्थ्य विभाग से, तो उसमें पैसे की जरूरत है उसको करके, उस आधार पे इसने सभी लोगों को दिखा करके उनसे पैसे लिए और सभी ने एक साथ कंप्लेंट जो की थी, रूपेश सावरानी, सिद्धार्थ खुर्द, सत्यम शर्मा, अरुण कुशवाहा, आदित्य गंगराडे, इनके द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें दिया कि आवेदक द्वारा 6 माह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के फर्जी लेटर पैड दिखा करके फर्जी सरकारी टेंडर दिखा करके 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 24 लाख रुपए अलग अलग दिनांकों पर आवेदक गणों से अपने खाते एवं फर्म के नाम पर नगद राशि प्राप्त की थी। यह कि आवेदक गण द्वारा समय जब अपनी राशि मांगी गई तो द्वारा हेला हवाली करने लगा। फर्जी बिल, फर्जी टेंडर, स्वास्थ्य मंत्री लेटर दिखाते हुए ये कहा कि हमारा टेंडर पास हो गया, बहुत जल्दी आपके द्वारा दी गई रकम वापस मिल जाएगी। और इसके बाद जो है फिर ये अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर लिया और फिर Applicant has filed second application. I am dismissing. My lord, he is the father of the applicant. He wants to say. आप कौन है? He is the father of the applicant, my lord. सर मैं एडवोकेट भी हूँ। सर चालान प्रस्तुत हो चुका है सर, और मेरा ये कहना है कि सर जो 161 के बयान हैं सर, उनमें 21 से ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है, जबकि FIR में सर जो है 6 माह पूर्व का है सर। और सर इसके बाद में अगर अपन समझौता देखें सर, समझौते इतने झूठे हैं और जबरदस्ती दबाव देके करवाए गए हैं सर। सिद्धार्थ खर्द के 2 समझौते हैं सर, एक 26 एक 22 का है और 27 एक 22 का और एक 26/9/22 के हैं सर। उसकी तीसरी कंडिका पड़ी है सर, दोनों में 8 महीने के अंतर में दोनों में 20 लाख के चेक दिए गए, उन्होंने दिए हैं, पर दोनों का चेक क्रमांक 1 है सर। What was the agreement? सिद्धार्थ सुनिधि इंटरप्राइजेस। ये सिर्फ लोन अमाउंट ही है ना? स्टेट लोन अमाउंट दिया लोन ये सर एक 22 के ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं सर। और एग्रीमेंट में बता देता हूँ, मालूम मेसर्स AB वेरियस सर्विस प्रोवाइडर अर्जित वर्मा, द्वितीय पक्ष अरुण कुशवाहा के मध्य हुआ है। इसमें लिखा है कि नहीं सर, ये बता रहा हूँ। यस आवश्यकता है द्वितीय पक्ष परिवार से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज दिनांक 5/4/2023 को किया था। प्रथम पक्षकार द्वारा आज दिनांक को 30/5/2023 के अंदर वापसी करने की सहमति प्रदान की थी, जिसके वजह द्वितीय पक्षकार द्वारा HDFC बैंक के चेक क्रमांक 0000443 से 5,75,000 रुपए की राशि चेक दिए थे। प्राप्त उक्त राशि का इन्वेस्टमेंट रिटर्न की राशि में शामिल था, जिसका भुगतान तयशुदा दिनांक को द्वितीय पक्षकार द्वारा चेक के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे, जिसे प्रथम पक्षकारों को आपत्ति नहीं होगी। ये एक इनका एग्रीमेंट हुआ था। दूसरा एग्रीमेंट सुनिधि इंटरप्राइज के साथ में हुआ। हाँ यही सर मैं ये बता रहा, इसमें 2 समझौते हैं सर, मैं बता रहा हूँ ना जी सर। एक 26 एक 22, 27 एक 22 का
26/9/2022 को जो एग्रीमेंट हुआ है स्वनिधि का, जी सर, इसकी तीसरी कंडिका में हाँ, यह है कि दुपती पक्षकार के द्वारा 20 लाख रुपए अंकन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेक के माध्यम से किया जाए, जिसका चेक क्रमांक 786108 है तथा इन्वेस्टमेंट की अवधि 26/9/2022 से 8 महीने के लिए होगी, जिस पर द्वितीय पक्ष के द्वारा 8 महीने की अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष को उसकी लाखी 20 रुपए लाभ के साथ विद प्रॉफिट भुगतान किया जाएगा। जी सर, अब इसकी तीसरी कंडिका है। ये तीसरी कंडिका नहीं सर, इस सेकंड वाले की भी वही कंडिका है सर। देखिए चेक क्रमांक वही है, 8 माह बाद भी। हाँ ठीक है, तो चेक तो वही रहेगा ना, चेक अलग कहाँ सर 8 महीने में चेक का भुगतान हो गया होता सर, नहीं या चेक बाउंस हो गया होता नहीं सर, डायरी दीजिए इनको सर, इनके कथन में है सर 161 की 15वीं लाइन में सर, इनके बयान में है कि 20 लाख का चेक इनको पहले ही मिल चुका है, 27/1 को ही मिल चुका है और वो इनके पास में है, अभी भी उनने लौटाया नहीं है। सिद्धार्थ खर्दे के 161 के बयान में है सर, 15वीं लाइन में। देखते हैं आप जी सर। थर्ड रिजर्व फॉर ऑर्डर नंबर 74 praying for Passover. शीट्स पेश करने के शीट्स आई नहीं है। Counsel appearing for applicant pays for short time to file additional documents after 1B. ये नंबर 75 सर वो हो गया है, मैं उन्हें क्लिक कर दी। Yes. ये नंबर 76 My lord, I am planning to take this case next week. Adjourn as prayed after vacations. Oblige, my lord. नंबर 77 थर्ड एप्लीकेशन में मतलब डायरी नॉट अवेलेबल, मतलब मैं पता कर लेता हूँ। सेकंड राउंड है सर। लिस्ट दो बार वो डायरी भेज चुके हैं तो सर किसी बार या गुरुवार रख लें सर। सर किसी केस में होगा तो मैं देख लेता हूँ सर, अभी सर नोटिस भी करना पड़ेगा। डे आफ्टर टुमारो डायरी मिलेगी तो पता चलेगा नोटिस का। सर डायरी तो आएगी सर, लेकिन नोटिस वहां से आएगा। डायरी अगर यहीं होगी तो नोटिस तो सर नया जारी होगा। नोटिस किस लिए होना है? इट्स नॉट रिक्वायर्ड सर। काइंडली सी पेज 15 आप देख लें सर, हो सकता है कि डायरी की आवश्यकता ना हो बिकॉज ऑफ माय ओल्ड क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स में वो सारी बातें। दिस इज 302 offense is serious. Day after tomorrow for consideration. नंबर 78 सर डायरी अवेलेबल नहीं। आप बोल रहे हैं ना कि नहीं सर, यहाँ अवेलेबल नहीं है डायरी सर, मंगवाना पड़ेगा मुझे। तो आप बोल रहे हैं कि एजी ऑफिस में होगी, 2 बार डायरी सर बोल रहे हैं कि एजी ऑफिस में। तो आप देख तो लीजिए है या नहीं है। नहीं है तो फिर देखेंगे सर। अब बात करिए क्यों नहीं भेजा 2 बार से सर। नंबर 78 मतलब 22/5/22 से सेक्शन भेजना था, लर्निंग स्टेटस रिपोर्ट मंगाया था। इसमें सबकी बेल हो गई थी, मैंने देखी। कब से हैं आप जेल में? 22/5/22 22/5/22 रिपोर्ट। ये स्टेट आपने एक भी विटनेस एग्जामिन नहीं किया। एक काउंटर केस है उसमें भी नहीं है। Applicant has filed third application under section 439 police station offences.
Counsel for applicant submitted that applicant is in jail since 22/5/22 for more than 1.5 years. Full stop. It is submitted that no witnesses has been examined. There is delay on part of prosecution in conduct of trial. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate opposed the application for grant of bail and submitted that offence is heinous in nature. Heard the counsel for the parties and perused the status report which has been. इसका second page कहाँ है status report का? इसका second page नहीं दिख रहा है. क्या लिखा? बुला लेना भाई. As per said status report, there are 23 witnesses to be examined. Case was fixed for examination of witnesses and bailable arrest warrants has been issued. Full stop. There is one counter case also, that is ST number 116 of 23, which is to be given analogous hearing along with this case. Full stop. In said case also witnesses. 16 विटनेस है. तो इसमें तो 23 लिखा हुआ स्टेटस रिपोर्ट में. ये जो है वो 16 है. ये 52602 है ना. It is further mentioned in status report that 1 or 2 years will be required for completing the trial. Full stop. Heard applicant is already in jail since 1.5 years and there is no likelihood of completion of trial in near future. Witnesses were not kept present in court for their examination. Right of speedy trial of applicant is being violated. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. Applicant be released on bail on furnishing personal bond. इनका रिकॉर्ड कितना है? रिकॉर्ड नहीं लड़ सकते. Personal bond in 150.